Hi everyone. I hope you guys are doing the problems. Okay, so after yesterday, I think you guys must be able to do the bit manipulation concept well. Like, have you guys tried the questions? And I think now I'm expecting that you could be able to do the questions, right, guys? Can anyone confirm? Anna? Great, great. Okay, so like we'll do a couple of questions and we'll end bit manipulation today. Okay, we can start trees. Uh, but we'll do the assignment questions, we'll do the bit manipulation questions. Okay, and then if at all time permits, then we can get started with the trees, which I'm not recommending, but let's see. Okay, 2 more minutes and then we'll start. Okay.
Yeah, sure, Rennie. We can think of that question. Okay, but that question, to be honest, the reason which I'm delaying it a little is that you might find it a little challenging in understanding with the phase you with your understanding. So I was just like giving you guys some time, okay, so that you guys will be trying it on your own, or once you reach a particular place where you can understand, then we can pick that up. But let's see. Okay, if you guys are understanding, let's see. Hinged element with constant space. Did we do this question? Hinged element? Let me just see. So hinged element is basically you're trying to find all the elements which are smaller than it, and after which elements are greater than it, right? Return the index of the element such that if it exists, right? So what's the approach which I told you guys to do this? It's the prefix sum and suffix array, right? Yeah. Prefix greater and suffix minimum array, right? So you can use prefix like if at all for any point, if at all you find that prefix element is little like the larger element in the prefix sum, okay, if that guy is greater than um, that guy is greater than like that guy is less than the actual value, it means that you can easily say that all the elements are less than the particular person, right? So that was the logic. Again, the same thing goes for suffix as well, right? So if you want to know the constant space wala method, okay? So constant space. Did you guys try to think of the way which I told you the product sum of an array, guys? Product sum of an array. Right? तो उसमें क्या कर रहे हैं? Like we are using an array, right? And we are trying to find key find while moving the numbers, right? But even in that case, okay. So even in that case, if at all you are using one array, then it is done, right? So I think we need to think of in any other way. So what are the approaches you guys like try to find? Can you guys tell me? Like, is there anything which you guys? So I think the reason why this question is asked is mostly because they want to check if you are familiar with the prefix operations. But definitely, but if you want to go one step ahead, okay, it's not mostly any other technique. It's just that you will be doing it using 2 pointers. Okay, so I'm just wondering ki what are the approaches you guys might have tried to explore. One extra similar to the, yeah, using one extra similar array you can do it, correct? Like that is also taking big of n time, right? So anything else? Do you try to do anything else? I can see some chat. Let me just pull a poll. Okay. Hmm, hmm, hmm. Hmm. So guys, so so there's some question that's let. Oh, my screen is not visible. I'm sorry.
Okay, so we'll talk about a few questions in the assignment before we move ahead to the bit manipulation. But today we'll be doing as many questions as possible from the bit manipulation. Okay, so that we'll be doing it. Okay, we'll be like closing the bit manipulation. Yeah, coming back to that thing which I was explaining. So as I was saying, okay, so there's another question that is trapping rainwater problem, right? As someone is saying, ठीक है, Arundhati, ठीक है? So just try that question as well, ठीक है? So you will be using the prefix minimum. I'm I'm not sure you will be using prefix minimum, or I think you will be using prefix maximum and suffix maximum in that array, right? So basically, what happens is you will be having a number of arrays, and you will be having buildings like this, okay? Something like this, okay? It's a very good question, to be honest, but like it's very straightforward if you guys can think, okay? So एक बार इस पे explore करो. For example, this is some having some value 7. Okay, this could be some 3. This could be some 8. This could be some 1, 1 in that way, right? 7 and then 6, right? So what is the if it rains in this particular array, right? So how much water will be filled? You can see that water will be filled in this area, right? And you can see that water will be filled in this area till this position, right? You can see that water will not be filling in this area because it will fall off, right? Because there's no wall, right? So you will just try to check at each point, okay? Like if you reach here, you can see that what is the next, like what is that element which is greater than this and it is immediate to it, right? Or which is the maximum element. Out of both of the maximum element from the left and from the right, you'll choose the minimum value because till there only you'll be fetching the water. Okay, using this logic, try to think ki how much water, if you add up all the waters, okay, just try to think what is the quantity of water that can be stored. So you'll be just checking ki what is the minimum value. If at all, what is the minimum value and what is the maximum value? Okay, just try to see that and try to what is the both the maximum values means minimum okay, you will be just doing this. Okay, so try to think ये stack का question लग रहा है correct, but stack के बिना भी हो जाएगा ये. ठीक है, you might be feeling that this is a stack question, लेकिन stack के बिना भी हो जाएगा, right? You might be thinking कि next greater element कैसे करते हैं, right? But try to think, इसका काफी सारा approaches है. You can just explore a little on this question. Okay, and there are a couple of questions if you want for knowledge you can try, just like LRU cache, right? Someone is asking, right? LRU cache is again a question that is very good and it is based on linked list as well as hash maps. Okay, so like if I want to teach this, then it will take me 1 hour, right? So I'll do a thing. I'll just put a link to what I thought. I thought this thing LRU cache previously. Okay, so I'll just put a link. Just a second. Let me just put it in the Discord right away. I might forget later. Okay, so I'll just send that. Okay, just watch it if you want. Okay, it's just for the extra knowledge, right? Anyway, you'll be doing that question in the module D. Okay, all the medium and hard level questions you're leaving, don't worry. It will be covered in module 3. Just focus on the fundamentals for now. Don't overburden yourself, just like I told you yesterday, right? So I'm just putting that thing. Okay, that is taught by me only. So you can just verify that if you're understanding or not. Like that is divided into 2 parts, but I'm just putting 1 part only. Okay, so I'm trying to find it. Just a second, guys. So guys, did you like how many of you tried to do the problems of bit manipulation? Like yesterday in the last part of the class, I explained how you are actually, you know, how you are actually using the and applying the bits, how you're flipping the bits, right? So did you guys try that? Not able to find the salary cash, man. I found it.
I'm just putting it in the chat. Right. So just see this. Okay. Swap all the, okay, we'll do these questions. We'll do these questions. Don't worry, guys. Don't worry. Okay. So I'm glad that you guys tried at least. Okay. So let me just quickly see what we did yesterday, right? And then we can just quickly go through it. Okay. So yesterday mostly we spent our time understanding how we are manipulating the bits, right? So hence the bit manipulation. Okay. In the first class, we learned what are bits, what is number system, right? And what are these things. Okay. Uh, what are the bits? Okay. Now you're actually going into each and every value ka bits, okay, into the bit level and making the changes. Correct. So I told you how you can use a mask to set a particular bit. Okay. And then you can just do and just to check if that bit is set or not, because all these things anyway will give the values of zeros except this value if at all it is set, right, guys? uh Dinesh, how to check if whether kth bit is set or not? Okay, I think I told you, right? So did you attend yesterday's class? We have done this question. So basically, you can create a mask which is set at a particular bit. Okay, it could be third bit, it could be second bit. Okay, and you can just do bitwise and to it. Okay, if you do bitwise and to it, okay, you will be getting 1 at that particular position. Okay, so you can just check if n ampersand and is greater than 0 or not. If it is greater than 0, wherever the bit is set, that bit is set. Correct. Okay, flipping bits, guys. ठीक है, तो we'll do that thing, no worries. But what I've figured out is कि in Java you don't have any unsigned integer, right? Right. So I told you how to count the number of set bits, right? You can either use a mask that is moving to the left side, or you can make the value move to the right side, right? Both the things will work. And then I showed you this particular observation of how you can subtract a value and just let that particular value become 0. Any doubts in this particular approaches which we discussed yesterday? Let me just create a poll. So I'm just asking ki from the yesterday's class, do you guys have any doubts? From the yesterday's class. I can see some words with the doubts. Okay. So from the yesterday's class, what are the doubts? N-1. Okay, Mohit. Next. Shubh Srivastava. Do let me know in the chat. I'll see if it's necessary to unmute. Around 40 students are having doubts with the yesterday's class. Yeah, sure, Joshna. One is the right shift bit. One is N-1. Okay. Or how to invert all bits. Okay. This thing we can cover them today. And or okay, sure. So see, guys, okay, great. Okay. So there are a couple of things which I've seen. Okay. So let me explain you this thing with n of N-1.
Okay, that is the first thing which you guys are facing error, right? So then we'll continue with our questions. Okay, so if you have a number which has some binary representation, right? So this is a number. Okay, its ka binary representation is this. This is not the number, right? It is not 1 crore or whatever, right? Okay, right? So okay, so how to count for negative numbers? That is another question. Let me just note down all the questions. Negative numbers bit count. Okay, let me clear all these doubts one by one. Other one is right shift ka. Other one is n-1 ka. और कुछ doubts हैं? Just let me know so that we can just have one more revision on that. कुछ और? Coding ka will code lot of questions today. Cool. Flipping ka, okay. Okay. This one is important. This one is important. I wanted to teach this today, but thanks that you guys have pointed. Okay. और कुछ? Divide integers using bit. We'll do it at the end. और कुछ? Okay, sure. We can do that. Swap odd even. Reverse bits. Okay, we can do this question. और कुछ? How to decide which to use bit mask? I didn't get you, Dipen. Can you reform the question? Okay, cool. So I think we have sufficient quantity of things to solve today. Okay, chalo, let's get into it. Which mask to use? Dipen, if you did you attend yesterday's class? We have discussed thoroughly how to use a bit mask, right? So I'll just quickly revise that again for you. Okay. But if it's still not clear, try to do that. Zor queries of subarray, it is in my tab, right? So let's take that in the class. Vikas, is that cool? Okay, great. Okay, guys, now listen to me. One by one, we'll deal it. Okay, questions are kafi, we'll deal it. Ab dekho, let me just quickly revise whatever we learned yesterday. Okay, dekho. One thing I've learned is using a mask. Okay, what is a mask? Mask is basically a number that you're creating, a custom number that you're creating, so that it is set at a particular bits. Okay, at a particular point you're making it set. At a particular point you're making it set. Okay, so that you will get some advantage out of it. Okay, guys, are you there with me? Okay, I have asked it and we have noted it down. We'll do that. We'll solve that. Okay, just bear with me. ठीक है, yes no में आंसर देना बस. ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछना. ठीक है, लेट्स यूज इट रेस्पॉन्सिबली. ठीक है, अब देखो मास्क इज बेसिकली you're creating a number, ठीक है, which you're wantedly putting a particular bit as set. ठीक है, could be multiple bits. ठीक है, it's not just one bit, right? So just to check, like you can use it in multiple ways. Here I just want to check the number of set bits, right? You are given an integer and you want to see कि how many bits are present, how many bits are set. मतलब यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे एक हुआ, right? So how many are there? You can see that you will be returning the value 6. Agreed? Right? तो वैसे ही, right? So in that way, like I'll be getting, you're supposed to tell that. Okay? For that, I'm using a tool called mask. Okay? How? If you have a number, and if you have a mask, this is the number and it's binary representation. It's not the direct number. Okay? It's binary representation. Okay? If you created a mask, that is nothing but 1. This is the value 1. 1 का binary representation is going to be like this. Correct? इसके पहले सब zeros होंगे, इसके पहले भी सब zeros होंगे. None of our business. But if you do this thing, n bitwise and mask, you can see that all of them will give the value zeros, right? And then यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है. These both are ones, right? So you will be getting 1 as the bitwise and. You know that if you do bitwise and,
for every bit, for every corresponding bit, the operation will happen. Agreed? So just by making this bit set and doing the bitwise AND of this value with this value, I can just check if this bit is set or not. If it is a zero value, if it has been a zero value, I'll be getting everything as zero. Correct? Bit set का मतलब है bit का value 1 है. Okay? And sir, but the zeros will give 1 previously. Zeros will not give 1. It is a bitwise AND. Atharva, if you have seen what does a bitwise AND do, bitwise AND क्या करता है? अगर दोनों 1 है तब भी 1 देगा. अगर कोई भी 0 है, it will be giving a 0 value. याद है तुम्हें? है ना? So just remember these truth tables, है ना? So if at all at this particular bit, if at all bit is set, only then you will be getting a value that is greater than 0. तो इस property को मैं use करके हर bit को set करूंगा. कैसे? If I do something like this, what does this form? It will form 1 को shifted 2 times. So it will be something like this. It will be this value, correct, with this bit set. So I can use this to check if this third bit is set or not. Do you guys agree? Right? So in that way, you can use mask to move towards left so that you can set each and every bit at a position and just check if that bit is set or not. In that way, I can increase the count. Guys, I'm just saying कि n ampersand mask is greater than 0. मतलब ये कोई वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर बिट पे वो सेट है ना. हेलो सौरभ, and won't give any false value. That is logical and you're talking about. Bitwise and अलग होता है. Bitwise and में हर एक bit का value decide होता है. Logical and में true or false मिलता है. ठीक है, दो statements को लो. Like if any of them is false, then you'll be getting a false. यहाँ पे true or false नहीं हो रहा है, यहाँ पे bitwise and हो रहा है. यहाँ पे एक number create हो रहा है. सौरभ, हेलो ब्रो. ठीक है. So that is how you're moving the mask to the left and you're making the value do the bitwise and just checking if it is 0 or not. ठीक है, तो वैसे किया हमने. Cool. ठीक है. So you're moving the bit, you're moving the mask towards the left side. You can see that how you're checking. ठीक है. If you want to check if it's a kth value, kth bit set है कि नहीं, तो kth bit तक 1 को shift करो ना. Like shift the mask for k minus 1 time so that kth bit will be set. And you can just do this n ampersand mask is greater than 0. You can just check this thing. Guys, correct? So this is how you check the number of count bits, the number of like you're basically यहाँ तक तुम बस check कर रहे हो कि set है कि नहीं. Check, set or unset. You're just doing this thing. ठीक है. अब you're just checking it till this point. ठीक है. So instead of moving the mask towards the left side, you can move the value towards the right side by doing this thing. ये चीज करो and you will move it. ठीक है. What does this thing is कि I'll tell you in a quite while again in a very brief manner. But this particular value 10101 will become 1010. मतलब it is shifted 1 so that this 1 is vanished. Same thing is shifted again, so 0 is vanished. Same thing is shifted again, this will be there. Same thing if you shift again, only 1 will be there. Do you guys agree? Correct. So in that way you're shifting and checking only the LSB. ठीक है. Mask change नहीं हो रहा. देखो mask हमेशा 1 ही है. Right? Either you can make the mask go left to the left side, either you can make the value go to the right side. Cool. है ना? I'll tell you, Rini. I'll just note that into my answer. Let me just mark that into my questions. ठीक है. Not equals to 0, greater than 0. Okay. अब देखो क्या करने वाला हूँ.
So see this thing, guys. So you're doing this, the third approach which I suggested. Okay, now this is important. Okay, so if you have a value like this, which who is having a bit binary representation in this format, if you do n minus 1, okay, what you will be getting, you will be kind of borrowing one from here and you will be passing that one, so that always the value is like this. So you can see that this is the what did I do? I think this is wrong now. Okay, this is the LSSB, that is least significant set bit. Correct. So this bit will become 0 and all the values after that will become 1. Right? This is what tends to happen. Correct. This is what tends to happen if you subtract a value. Okay, इसको देख लो. इस value पे just try to add 1 and you will get the clarity of how it is working. Add 1 to it. तुम देख सकते हो 1 will be carry forwarded. 1 will be carry forwarded. And it will give me exactly this previous value which I got. This is the value, right? I got it back. Correct. So do you guys agree that n-1 करने पर all the values after the least significant set bit will become 1 and that bit will become 0? Do you guys agree with that statement? n-1 कैसे निकाला? ये चीज मैं कल बताया था. n-1 कैसे निकाला? इसको -1 करना चाहिए मुझे. ठीक है. So तुम देख सकते हो 0 से तो निकाल नहीं सकते. So I'll borrow from it. ठीक है. तो यहाँ पे भी है नहीं कुछ borrow करने के लिए. So he'll borrow from here, right? So ये 0 हो जाएगा. This guy will become 2. लेकिन 2 से एक borrow कर रहा हूँ, right? So it will be 1 here. It will be 2 here. 2 minus 1 is 1. 1 minus 0 is 1. And 0 minus 0 is 0. बाकी सब same है. Right? So now देखो, if I do n and bitwise and of n-1, I'll be seeing that all these things are same. So I'll be getting all the values as same till this point. यहाँ पे this has become inverted, right? This has become inverted after these things. Okay? So all of them will become zeros. Don't you think, guys, this magic which we have done, okay, is just unsetting the last bit, last set bit? So अगर कोई question पूछेगा, I'm giving you a value, bro. Can you unset the last set bit, least significant set bit? What will you do, guys? No, don't XOR it with 1. ठीक है, least significant bit नहीं. ठीक है, least significant set bit को you should be doing it as 0, right? So what you will be doing is n equals to n bitwise and of n-1. You should assign this value into n again. ठीक है, वरना this is a value. ठीक है, this is not been assigned to anything, right? If you do this thing, you can see that ये bit 0 हो गया and बाकी सब 1s हो गया, तो दोनों का ampersand करोगे तो everything will become 0. Agreed? Right? So you can use this thing, you can use this technique to check if it's a power of 2 as well. Yesterday I told you, right? क्योंकि अगर ये 0 हो गया, if n ampersand n-1 becomes 0, इसका मतलब only one bit is set. Agreed, guys? Hello? How? धर्मेंद्र देखो, अगर only one bit is set, मतलब ऐसा होने वाला value जितना भी 0 सोलो, right? If you do -1 to it, it will become like this. And if you do bitwise and of it, everything will become 0. Do you agree with this statement, Dharmendra? Right? So बस ऐसे ही I can easily say if it's the power of 2 or not. Power of 2 में क्या होता है, एक ही bit set होता है ना. Correct? So बस I think this particular question which you guys have asked is clear, right? n-1 is clear. है ना? Anyone it is not clear? No, right? ठीक है, so that is done. ठीक है, अब मेरे से ये कोई ये पूछ रहा है कि ये क्या है, what is this, right? So let's see what is this. I told you right shift में दो प्रकार के right shift होते हैं.
एक में यू आर डूइंग इट इन दिस वे, एक में यू आर डूइंग इट इन दिस वे, राइट? इसमें क्या हो रहा है? इसमें मैं बता रहा हूँ नॉर्मल है, इफ इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, दोनों सेम है। लेकिन इफ इट बिकम्स अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, अगर समझ लो मेरे पास एक बिट है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, सो ऐसे 32 बिट्स तक है, सो दैट यू गाइस वोंट कंफ्यूज, ठीक है? So 32 bit का value है this. Do you guys agree that this is a unsigned, this is a negative value? क्यों? क्योंकि signed bit set है ना, और इसका 2's complement लोगे, right? Then you will be getting the actual value hidden inside it. Agreed? अगर मैं इस value को, अगर समझ लो ये n है, इसको मैं if I do something like this, right shift of 1 करूंगा, ठीक है? What it will become is कि it will shift, ठीक है, मतलब 1 यहाँ पे आएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, ये वाला 0 यहाँ पे आएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे शिफ्ट होता रहेगा, राइट? एंड देन यू कैन सी दैट यहाँ पे you'll be getting 1, यहाँ पे you'll be getting 0, यहाँ पे you'll be getting 1 and 0 will be lost, ठीक है? बट कमाल ये होने वाला है कि यहाँ से 0 नहीं आएगा, यहाँ पे since this guy is 1, you'll be getting one more 1 outside the box, from outside the box to keep its sign alive. ये साइन को जिंदा रख रहा है, ठीक है? क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू का वो ही वांट्स टू प्रिजर्व इट। हाँ, साइन मींस नेगेटिव, करेक्ट है ना? दिस बिट इज सेट, एमएसबी is representing the sign, correct, negative sign, right? If it is set, msb is set मतलब negative है, right? So in a way it is obvious, right guys? So if you get a value like -4, if you divide it by 2, you should be getting -2 only, right? You should not be getting uh, something else only. You should not be getting a positive value, correct guys? हाँ, करेक्ट रेनी। तो इसको इसीलिए इट इज प्रिजर्विंग द साइन, सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड साइंड राइट शिफ्ट। Is this making sense, guys? हेलो, ठीक है? ये है अनसाइंड, इसको फर्क ही नहीं पड़ता तुम कौन हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बस मुझे क्या करना है, मुझे बस शिफ्ट करना है, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे द सेम वैल्यू लोगे, यहाँ पे 0 आएगा, बाकी सब सेम आएंगे, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, लाइक इफ यू आर असाइंड और अनसाइंड पर्सन, ठीक है, ही विल जस्ट शिफ्ट इट, ठीक है? सो व्हेन यू वांट टू परफॉर्म एब्सोल्यूट बिटवाइज ऑपरेशंस ना, यू विल बी यूजिंग दिस। क्या मतलब है मेरा, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर बिट का, मतलब इस पर्टिकुलर नंबर का नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, आई विल बी गोइंग फॉर दिस, क्योंकि इफ आई गो फॉर दिस इट विल टेल मी एग्जैक्टली नंबर ऑफ बिट्स, क्योंकि मैं हमेशा एलएसबी पे बिट सेट है कि नहीं, आई एम चेकिंग, राइट? हेलो, राइट? if I go for this guy will produce one more bit out from outside, ठीक है? In a way you're adding the bit ना, you're increasing the number of bits, right guys? You're increasing the number of bits, correct? So I don't want to do that, I just want to perform absolutely whatever is correct, ठीक है? तो इसी रीजन के वजह से अगर मैं नंबर को राइट शिफ्ट कर रहा हूँ एंड पुटिंग द मास्क कांस्टेंट, आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर कमांड बिकॉज आई डोंट want to do this, I don't want to bring one more one into the picture because that will destabilize my number of counts, correct? पॉजिटिव के लिए दोनों सेम है, बस नेगेटिव के लिए ये काम होता है, राइट? राइट, इफ यू आर यूजिंग इट वाइज, सो फर्क पड़ेगा इफ इट्स अ नेगेटिव नंबर, राइट? बट इफ इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू देन आई डोंट थिंक कि कोई फर्क है, ठीक है? अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तब फर्क है, बिकॉज यू आर नॉट reproducing any more number of set bits in this particular operation. अगर समझ लो मोहित is giving me a number like this, ठीक है? मोहित, can you tell me how many bit value is this? How many bit value is this?
मोहित, इज दिस अ 5-bit वैल्यू? अरे नहीं, मोहित गुप्ता से पूछ रहा हूँ, 5 ना? नहीं, मोहित गुप्ता को आंसर करने दो. इट कुड बी पॉसिबल दैट दिस 32-bit वैल्यू ना. लाइक यहाँ पे जीरोस भी तो हो सकता है. ये एमएसबी करके कौन बोला तुम्हें? है ना यार, इतने सारे मोहित है यार क्लास में. मोहित कुमार, मोहित मोहित गुप्ता, मोहित प्रजापति, है ना. सो इफ यू आर सेइंग इट्स अ 13-bit वैल्यू, ठीक है, तो पहले सब जीरोस रखो. इफ यू वांट टू राइट शिफ्ट इट, यू विल डायरेक्टली शिफ्ट इट. ठीक है, इट विल बिकम समथिंग लाइक 0 0 0, उसके बाद 1 1 0 1. एग्रीड मोहित? करेक्ट, बिकॉज इट्स नॉट द एमएसबी. ओनली इफ इट्स एन एमएसबी, ओनली देन एमएसबी मतलब उस डेटा स्ट्रक्चर की एमएसबी की बात हो रहा है. करेक्ट. सो इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू. उस डेटा मतलब उस डेटा वेरिएबल जो भी लिया तुमने, उसका एमएसबी अगर सेट है, ओनली देन इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, अदरवाइज इट्स नॉट अ नेगेटिव वैल्यू. Correct, guys? So I hope you guys are clear with this particular thing. Are you or not? एक बार पोल करने दो. Okay, cool. I can see that only few people are, very few people are not clear still. ठीक है. So if that is the case, ठीक है, तो मतलब ज्यादा कुछ है नहीं यार. बस लाइक अगर तुम्हें एब्सोल्युटली, इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, राइट, सो जस्ट डू दैट. बिकॉज मेनी पीपल आर फेसिंग एरर, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम रिपीटिंग. ठीक है, तो चलो, नेगेटिव नंबर में बिट काउंट कैसे करें, दैट इज द क्वेश्चन. दैट इज अनदर डाउट. गाइस, नेगेटिव नंबर में बिट काउंट कैसे करें गाइस? कैन एनीवन टेल मी? करेक्ट. अगर नेगेटिव नंबर है, ठीक है, इफ इट्स अ नेगेटिव नंबर, इट इज गोइंग टू बी अ वैल्यू दैट इज नेगेटिव, है ना. इसका मतलब 32 बिट में ये वाला बिट सेट होने वाला है. करेक्ट, जो भी वैल्यू होगा, आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज, इट्स गोइंग टू बी अ 2's कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, बट if I do this thing, if I do the signed operation, then number of bits are increasing. Correct, like कहीं से भी एक बंदा आ जा रहा है, right? I don't want to do that, right? I just want to absolutely treat it as if unbiased, in an unbiased way. So I'll just go for it. ठीक है. So guys, is this a negative value? Do you guys agree? Guys, this is a negative value. 32 bit है, मतलब बीच में कुछ कुछ zeros है, right? It's a negative value. The moment I do this thing, what will happen? Can anyone tell me? Can anyone tell me what will happen if I do this thing? It will be shifted, right? All the bits will be shifted towards, है ना. So देखो, यहाँ पे मैं पहले चेक कर लूंगा, उसके बाद शिफ्ट करूंगा. सो दिस विल बी लॉस्ट एनीवे. ठीक है, आई एग्री विथ यू. लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना. देखो, 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 आता है, राइट. सो दिस होल थिंग विल बिकम अ पॉजिटिव वैल्यू. करेक्ट, इट विल बिकम अ पॉजिटिव वैल्यू, सम वैल्यू. ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरली बाई 2. ठीक है, it will become a negative positive value, right? And that is the reason why I'm doing while n is not equals to 0. ठीक है, अगर मैं while n is greater than 0 लिखा होता, and if I keep on dividing this thing, ठीक है, तो क्या होने वाला ना, only for the positive values this guy will work. For the negative values it won't work, because negative value is a negative value first. एक ऑपरेशन के बाद पॉजिटिव वैल्यू बनेगा. करेक्ट. So if I write something like this, in the first step it will fail. Do you guys agree? Udit, you're correct. It is a negative value. Negative से एकदम positive बन जाएगा. फिर उसके बाद छोटा छोटा होते 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 it will become a 0. Right? Right? It will become a 0 value. ठीक है. तो जब तक 0 नहीं होगा तब तक चलाओ. ठीक है. Even if it's a negative value तब भी चलाओ. क्योंकि एक स्टेप में वो पॉजिटिव बनेगा. लेकिन if I choose this approach, ठीक है, पॉजिटिव के लिए both it will work, but negative value के लिए it will be rejected here only, and you will be getting the count as 0.
Do you guys agree with this statement? Hello guys. बस नेगेटिव सा पॉजिटिव कैसे होगा मोहित? पॉजिटिव इसीलिए होगा क्योंकि वी आर शिफ्टिंग द बिट्स विदाउट इवन कंसिडरिंग, राइट? सो ये वैल्यू like MSB will become 0, right? So it will become a positive value. क्यों? Guys, hello, is this clear? Right? So I've cleared this doubt and I also bonus में ये doubt भी clear कर दिया, correct? And I okay, we'll do these things, ठीक है? And I also told you about the bit mask, right? So how to use it, ठीक है? I told you yesterday, ठीक है? Let me clear it again, ठीक है? अगर मुझे चेक करना है kth bit सेट है कि नहीं, तो मैं kth bit पे सेट करूंगा मास्क को and I do the bitwise AND. If the value is greater than 0, I can say that k bit is set. Hello, correct? How we know the bit is negative or not? Bro, Mithilesh, I didn't get you. Can you unmute yourself and just let's have a conversation if you want? एक बार hand raise करना. Correct, Jayesh. Correct. So do you want to unmute Mithilesh? Yeah. I think he raised his hand. हेलो सर। हाँ मिथिलेश बताओ। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये डेट जो बताया है कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं, डेट n इक्वल टू 1010 जो लिखे हैं इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डेट नेगेटिव है? बिट नेगेटिव नहीं होता कभी, ठीक है? बिट हमेशा पॉजिटिव, बिट हमेशा 0 या 1 ही होता है, ठीक है? क्या नेगेटिव होता है? एक नंबर नेगेटिव होता है ना? नंबर या पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, बिट कभी नेगेटिव नहीं होता। बिट हमेशा 0 या 1 होता है, सेट और अनसेट होता है, ठीक है? सर ये मार्क्स का क्या यूज होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ डेट को कब यूज करेंगे? करेक्ट दीपेंद्र। सो मास्क का ये यूज है ब्रो, जैसे कि यहाँ पे देखो इस स्पेस में, तो मैं मास्क में इस पर्टिकुलर बिट को मैं सेट कर दिया। कैसे? मास्क इक्वल टू 1, 1 को मैं k टाइम शिफ्ट करके यहाँ तक पहुंचा दिया, तो मैं मास्क को यहाँ पे सेट कर दिया। अगर ये दोनों को मैं बिटवाइज एंड करूंगा ना, तो ये सब तो जीरो होंगे ही, क्योंकि बिटवाइज एंड में सब जीरोस हो जाएंगे, ये भी जीरोस हो जाएंगे, राइट? लेकिन अगर इस पर्टिकुलर बिट पे 1 है, तब भी ये 1 हो पाएगा। सो लाइक इट इज एक्टिंग लाइक अ चेक कि अगर यहाँ पे 1 है तब भी मुझे कोई वैल्यू मिलेगा जो ग्रेटर देन 0 है, वरना नहीं मिलेगा। ये तो ठीक है सर, लेकिन एक बार कोडिंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ इसको कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, किए थे, कल किए थे। आर यू देयर इन द एचटीएस क्लास? लास्ट मोमेंट तक आखिरी के 10 सारे 10 ठीक है, एक बार नोट्स भी देख लेना, हमने ये चीज कल किया था, ठीक है? हमने 2 मेथड से किया। एक तो लेट मी जस्ट शो यू, सी यहाँ पे देखो, एक सॉल्यूशन ये है कि यू आर शिफ्टिंग द वैल्यू, लेफ्ट शिफ्ट करके यू आर चेकिंग इट विद द मास्क कि वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ठीक है? सो दैट इज वन वैल्यू, ठीक है? हमने ये नहीं किया लाइक दिस अनदर वैल्यू, दिस अ बेस्ट सॉल्यूशन व्हिच आई टोल्ड यू, ठीक है? नंबर ऑफ बिट्स एग्जैक्टली मिलेगा, लेकिन हमने ये नहीं किया कि हाउ यू आर शिफ्टिंग द मास्क, ठीक है? तो मास्क को हम ऐसे सेट कर सकते हैं, 1 को लेफ्ट के टाइम शिफ्ट करो, जिससे मास्क ऐसे दिखेगा हमारा के जीरोस के बाद, राइट? एंड आई कैन यूज दिस मास्क, ठीक है, एंड एम्परसेंड मास्क करके आई कैन जस्ट चेक इफ इट इज ग्रेटर देन 0, देन एट दैट पर्टिकुलर बिट द बिट इज सेट करके, ठीक है? Your voice is kind of completely muffled, man. Like if you can fix that, then it will be great. ठीक है, देखो अब तक we learned about bits, ठीक है? We just learned about bits, we just learned about number system, लेकिन बिट मैनिपुलेशन यू आर लर्निंग इट फ्रॉम हियर, ठीक है? देखो पहला चीज तुम चेक कर रहे हो कि केथ बिट सेट है कि नहीं। अगर तुम्हें सेट करना है केथ बिट को, यू विल क्रिएट अ मास्क हियर एंड यू विल डू एन और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या होता है
कि अगर कोई भी 1 है तो 1 देगा एट द एंड, राइट? तो यहाँ पे इफ आई मेड दिस बिट सेट, doesn't matter if it is set or unset, it will become 1. Do you guys agree with this statement? ये शिफ्ट का स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा. ओके शुभ, वी कैन डू अ थिंग, ठीक है, वी कैन शिफ्ट इट, ठीक है, वी कैन शिफ्ट, कुछ शिफ्ट करके देखे दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है. तो विल डू दैट, ठीक है, विल डू दैट. यहाँ पे सेट किया हूं मैं बिट को, राइट? वैसे मैं फ्लिप करना चाहता हूँ तो मैं जोर करूंगा. जोर में हमेशा 1 के साथ जो भी जोर होगा इट विल बी फ्लिप्ड, ठीक है. यहाँ पे 1 इज जॉर्ड विथ 1, इट गॉट फ्लिप टू 0. 0 is odd with 1, it got flipped to 1. Do you guys agree? Right? मैं flip कर दिया, ठीक है. All these things we have done, ठीक है. And this is one of the beautiful questions where we are calculating the number of times a particular value will be odd, ठीक है. And using that we can just check if it's an odd times odd or even times odd. If it is even times odd, we can completely discard it. If it is odd times odd, we can just mark it as a value, correct? So we are doing that thing, okay? So I'll code this down, don't worry today, okay? But guys, like, is this thing clear till now? I use I is shifted as bitmask, correct? No problem, Ajay, you can use that. नेगेटिव नंबर्स के लिए मोहम्मद शमीन, आई थिंक आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है. अगर एक नेगेटिव नंबर है इसका मतलब उसका एमएसबी सेट है, करेक्ट? तो मुझे क्या करना है, मुझे बस अनसाइंड राइट शिफ्ट करना है, जिससे like I'll be checking only the LSB. If LSB is set, I'll do count plus plus, ठीक है. तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके मैं राइट शिफ्ट करता जाऊंगा, जिससे like ये वैल्यू अब LSB बनेगा, उसके बाद ये वैल्यू LSB बनेगा, राइट? इन दैट वे I'll be doing this thing continuously, ठीक है, till it becomes 0. And if n ampersand 1 is greater than 0, I'll be doing count plus plus. बस ये है कोड to check the number of set bits for negative numbers, ठीक है. नेगेटिव होने का वजह से यही प्रॉब्लम आ रहा है कि इफ यू आर डिवाइडिंग इट, इट इज एक्टिंग लाइक अ साइंड डिवीजन, करेक्ट? तो वो प्रॉब्लम हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली नो कि इफ इन द बिटवाइज थिंग, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इफ यू आर डूइंग एन अनसाइंड शिफ्ट, यू आर नॉट बॉदरिंग इफ इट्स अ नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, यू आर जस्ट शिफ्टिंग इट एज इफ इट्स अ बाइनरी वैल्यू, ठीक है. सो द नंबर ऑफ बिट्स विल बी कांस्टेंट. डू यू गाइस एग्री गाइस? तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, यू आर जस्ट बेसिकली डूइंग दिस थिंग, ठीक है. चलो मैं एक दो क्वेश्चंस करता हूँ सो दैट कोडिंग भी इजी हो जाएगा, है ना. तो लेट मी जस्ट कोड इट, ठीक है. एक बार कोडिंग करते हैं, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट रिवर्स बिट्स, ठीक है. रिवर्स बिट्स करना है मुझे. रिवर्स बिट्स का मतलब क्या है? मैंने पहले गलत समझा था क्वेश्चन, ठीक है, जब पहली बार करा था. आई अंडरस्टूड इट इन अ रॉन्ग वे. वेयर इज दैट क्वेश्चन मैन? रिवर्स बिट्स. Guys, one more thing before we start. Did you guys try this question, Priyanka and Toys? मैं कल जो कोड लिखा था वो 99% कोड थी, बस वहां पे बस system.out.println करना था, रिटर्न नहीं करना था बस. ये चीज किया था ना? हेलो, राइट? इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, है कि नहीं? राइट. तो ऐसे ही समझ में आता है ब्रो, थोड़ा ट्राई रन करना पड़ता है खुद से, ठीक है. तो आई थिंक माई कोड वाज वर्किंग, ठीक है. आई थिंक आई डिड इट आफ्टर द क्लास, ठीक है. तो इट वाज वर्किंग. आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू गाइस, ठीक है. लेट मी जस्ट सबमिट इट. क्या हो गया ये? या एवरीथिंग गॉट पास्ड, राइट? ऑल द टेस्ट केस गॉट पास्ड, ठीक है. वन टेस्ट केस वाज नॉट पासिंग, ठीक है. इसीलिए पास नहीं हो रहा था क्योंकि आई वाज नॉट स्टार्टिंग विद 0. व्हेन आई डिड विद 0, ठीक है, पहले मैं क्लास में 1 बताया था क्योंकि रेंज ऐसे दिया कि 1 नहीं हो पाएगा, राइट? लेकिन बाद में लाइक आई हैव सीन द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, आई हैव सीन दैट वाइट वेट 0 भी हो सकता है, तो मैं 0 से स्टार्ट किया, तब वो एक टेस्ट केस चल गई थी. डिड यू गाइस ट्राई टू debug दिस? मोहम्मद तलिब,
राइट। सो मैंने देखो मेरा भी फेल हुआ था एक टेस्ट केस, ठीक है, मेरा भी एक टेस्ट केस फेल हुआ था। देन आई सीड द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट में लिखा है वेट कुड बी फ्रॉम 0 to 10 power 4। तो मैं समझ गया, अच्छा ओ ओके, सो आई डिड इट विद 0 and then instead of returning I just printed. These are the only changes I did in this question after coding it in the class. Guys, any doubt in this question? Right, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आई थिंक वी कैन डू दिस क्वेश्चन टुडे इफ टाइम परमिट्स, राइट। यार ऐसे लॉजिक, देयर इज नो रेसिपी फॉर दैट मैन, कि लॉजिक कैसे बिल्ड कर ले, तो वो धीरे धीरे बिल्ड होता है, ठीक है, मैं बता दी काफी बार। धीरे धीरे तुम ये सब चीजें सीखोगे, है ना। तो ऐसा नहीं होने वाला कि एकदम से तुम प्रो बन जाओगे कुछ भी चीज में। लाइक धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि यार वाओ, द वे आई एम थिंकिंग इज हैज चेंज्ड नाउ, राइट, आफ्टर 3 months, after 4 months of doing the DS test, right? So what is the question we were searching for? We were searching for reverse bits, right? Where is that reverse bits question? Can anyone send me that question? Okay, reverse bits. ठीक है, हाँ, असाइनमेंट सॉल्यूशंस आर डेफिनेटली गुड, ठीक है। तो ये देखो, इट इज गिवन दैट 32 बिट अनसाइंड इंटीजर दिया हमें, है ना, अनसाइंड इंटीजर दिया है, ठीक है। तो जावा में तो, हाँ, थैंक्स थैंक्स धर्मेंद्र, ठीक है। हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं पहले गलत समझ गया, मैंने पहले ऐसे रिटर्न किया, राइट। सो मैं पहले गलत समझा था, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइस, ठीक है। सो लेट मी रन दिस कोड एंड यू विल बी गेटिंग इट एज रॉन्ग ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि मुझे फ्लिप नहीं करनी थी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लिप हो गया बिट्स, है ना, ये करने, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट, सो यू जस्ट फ्लिपिंग द बिट्स, करेक्ट, राइट। So you're just flipping the bits. I should not be doing that, ठीक है। I should be doing something else, that is reversing the bits। मतलब अगर बिट्स ऐसा है, ऐसे 32 तक कुछ कुछ है, ठीक है, आई नीड टू रिवर्स इट, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा 1 1 0, उसके बाद कुछ कुछ कुछ, उसके बाद 1 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 1 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 0 1 1। आई काइंड ऑफ फ्लिप रिवर्स्ड इट, मतलब जो ऑर्डर है उसको उल्टा कर दिया। क्वेश्चन क्लियर है सबको? एवरीवन, क्वेश्चन इज क्लियर? डू यू वांट टू डू इट, काइंड ऑफ रिवर्स स्ट्रिंग, लेकिन इट्स नॉट लाइक रिवर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिवर्स करना बहुत इजी है, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। तो शैल आई कोड इट गाइस? अब मैं कोड कोड भी फिक्स करता हूँ तुम लोग का, देखो अभी, देखो अब मुझे सोचने दो कैसे करना है इसको, ठीक है। मुझे रिटर्न करना है कोई वैल्यू, है ना, जो वैल्यू उल्टा होने वाला है, ठीक है। अप्रोच क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन को लेकर, व्हाट इज गोइंग टू माय अप्रोच, लाइक इफ यू हैव अ वैल्यू लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समझ लो इतने बिट का वैल्यू है, ठीक है, 32 बिट्स लिख नहीं सकते, इसे मैं यूजुअली स्किप करता हूँ, बट आई होप यू गाइस आर स्मार्टर, है ना। मोहम्मद, यार ये तुम लोग, लाइक दिस इज नथिंग बट वंस कॉम्प्लीमेंट मैन, वी आई टॉट दिस इन द क्लास, पे अटेंशन, पे अटेंशन, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट of any number, it will just flip the bits of all the numbers, ठीक है। store it as a string and reverse it, not a good idea bro, not a, definitely not a good idea, बहुत बुरा आइडिया है ये तो, है ना, क्योंकि तुम्हें इंटीजर रिटर्न करना है, वापस तुम्हें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 पॉइंटर स्वैप मत करो। एग्जैक्टली शुभम, यू आर करेक्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। लेट मी गो टू माय पीपीटी। You have a value like this, it's some, like it could be a, you know, it could be a 32-bit integer, but I'm just choosing some 16-bit or whatever integer is this. You have a value like this, that is the value n. You're supposed to return an answer which is exactly reverse to it.
कैसे करूं बताओ बताओ guys, कैसे करना है इसको? करेक्ट विपिन, ठीक है। तो अब एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। बिट मैनिपुलेशन का लाइक वी हैव लर्नड, ठीक है, यू लर्नड अ टूल कॉल्ड बिट मैनिपुलेशन। तो बिट को चेंजेस कर सकते हो, बिट को चेक कर सकते हो, बिट को सेट कर सकते हो, राइट। तो यही काफी है ना, चेक करो, सेट करो, चेक करो, सेट करो, है कि नहीं? चेक कैसे करोगे? चेक कैसे करोगे? तुम चेक करने के लिए एंड मास्क करो, मास्क 1 है तो यू विल बी चेकिंग इफ दिस वैल्यू इज करेक्ट। अगर सेट करना है और करो, और द मास्क, है कि नहीं? अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूँ। तो अगर कहीं गलत हो, तुम लोग ऑब्वियसली मेरे से प्रोस हो तो बता देना, ठीक है, कहीं गलत हो तो, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक मास्क लूंगा, मास्क का वैल्यू होगा 1, मतलब 1 नहीं लूंगा, मास्क नाम रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, सब जीरोस होंगे उसके, except for the last one. Agreed? I'll just check n ampersand 1. 1 is the mask. Is this guy greater than 0? क्या निकलेगा इसका मतलब? Last bit is LSB is set. Else LSB is not set. क्यों guys? This guy will not even give greater than 0. It will give 1 only. 1 मतलब LSB is set. 0 मतलब LSB is not set. Do you guys agree with this statement? Hello? सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको चेक करूंगा, लास्ट बिट को चेक करूंगा कि अगर सेट है कि नहीं। सेट नहीं है, ठीक है, आई हैव टेकन एन आंसर जो सब जीरोस है, सब कुछ जीरोस है, एवरीथिंग इज जीरो, ठीक है। इसमें आई जस्ट पुट इट, कैसे? यहाँ पे रखूंगा मैं, यहाँ पे जीरो है, सो नो वरीज, ठीक है, नो वरीज, जीरो यहाँ पे है, सो कूल, ठीक है। आई विल शिफ्ट दिस टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्यों? बिकॉज ऐसे ऐसे करके लाइक आई एम गेटिंग द एलएसबी बट आई एम पुशिंग इट टुवर्ड्स एमएसबी। देखो ध्यान से अभी, ठीक है। नाउ लेट मी राइट इट इन अ डिफरेंट पेज। ठीक है, so it is n ampersand 1, right? So I'm sorry, it is answer, right? So n ampersand 1 is 1, bit is set, LSB is set. If it is 0, LSB is unset, right? अभी देखो ध्यान से, अगर मैं देखा कि 0 है तो मैं इसको 0 ही रहने दूंगा, ठीक है। नाउ आई शिफ्ट दिस थिंग, ठीक है। नाउ अभी मेरा इंटीजर यही है, ठीक है। अगेन आई जस्ट चेक इफ दिस वैल्यू इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। like it is set, then what I'm going to do is I'm going to add आंसर को मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा एक, आई एम लेफ्ट शिफ्टिंग द आंसर, एंड जो भी आंसर लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे जीरो आएगा, एक नया जीरो आएगा, राइट। यहाँ का जीरो जाएगा, यहाँ का नया जीरो आएगा, एंड इस जीरो पे आई बी जस्ट डूइंग दिस थिंग, और रखूंगा, और अगर 1 है तो मैं 1 रखूंगा यहाँ पे। सो आई एम जस्ट काइंड ऑफ सेटिंग दिस बिट टू 1। डू यू गाइस एग्री विद दिस स्टेटमेंट? राइट। अब वापस मैं इसको राइट शिफ्ट करूंगा एंड आई विल चेक विद द एलएसबी, अगेन इट इज 1, राइट। सो अगेन आई विल शिफ्ट दिस, सो इट विल बिकम समथिंग लाइक 1 0 1, राइट। ये सब जीरो ही है, ठीक है। एंड ये शिफ्ट करने पे ये आया, ठीक है। एंड देन अगेन इट, सिंस इट इज 1, आई एम डूइंग इट और एंड पुटिंग इट इनटू आंसर, और 1 करूंगा, राइट। दिस बिट विल बी सेट। guys, are you able to see the beauty of how I'm moving it? ठीक है, I'm just checking for the last bit, ठीक है, and I'm creating this bit, ठीक है। So let me take a smaller example and it will be much clear for you, ठीक है। So समझ लो, I have this value, small example, ठीक है। I'm just checking, this is the mask, that is 1,
ठीक है. So I have an answer that is 0 completely. ठीक है. अभी देखना, ध्यान से सुनना. ये वाला bit, like I'm just checking, this is n and this is 1, right? I'm just doing this thing. If this is 0, if this is 1, ठीक है, LSB set है. Set मतलब 1 है. You can see, right? LSB is not set. ठीक है. अब देखना ध्यान से. Since I'm doing this n ampersand 1 कर रहा हूँ, right? So what you will be getting is, you will be getting a value 1, right? So I'll put 1 here. I'll make this guy 1. ठीक है. Clear यहाँ तक? Now you must be asking, how am I reversing it? मैं तो same रख रहा हूँ. देखो, reversing step starts from the next step. ठीक है. How I'll show you. ठीक है. Now n will become something like this. I've left shifted n. N equals to n left shifted. So it will become something like this, right? And now 1 का value will remain the same. Again the same thing. You can see that 0 आया, right? इस time पे 0 आया. So bit is not set. So I'll make again the LSB change. ठीक है. उसके लिए I need to shift these bits towards the left side. Correct? Right? How do I do it? I'll do it in this way. Answer left 1. इसका मतलब ये है कि ये कितना बिट है? 6 bits है, right? So I'm making this value. Sorry, I'm making this value 1 0. I've left shifted this. Just see, this is the answer. I've left shifted this, so it is 1 0 now, right? Now let me do OR with the value that you got by this n ampersand 1. मतलब ये लास्ट बिट जो भी मिला है ना, यहाँ पे देखो लास्ट बिट 1 मिला है, तो 1 को मैं OR कर दिया, right? Now I got 0, right? So I'll be XORing it with all zeros. XOR कर रहा हूँ, it's like setting, right? So I'm putting it inside the answer. दोनों को आंसर में रखा. देखो, इसको मैं आंसर में रखूंगा. My answer will be something like this. Correct? This is my answer right now. Correct? Now let me do it again. Okay, let me do the same thing again. Now my n value will become 1 0 1 1, right? My 1 value will be the same. Okay, I've left shifted it again. You can see that again it is set. Again LSB is set. So again I'll follow the same procedure. I'll move this guy towards left. Okay, and then I'll do whatever the value you're getting. Okay, so again इसको left shift करो, you'll be getting this value. Left shift किया with value 1, and now let me OR it with, you can see that n ampersand 1, that is 1 at this condition, right? You'll be getting 1. देखना. Now don't you think आंसर का वैल्यू क्या होने वाला है? आंसर का वैल्यू होने वाला है 0 0 0 1 0 1. Do you guys agree with this statement? You're just moving it in this direction, and you're making this guy move in this direction. So in a way you're kind of reversing the number of bits. अब देखो एक और एग्जांपल देख लो. अब n का वैल्यू will be this. n का वैल्यू is this one. 1 का वैल्यू is same. Now n ampersand 1 is going to be 1 again, right? Now आंसर में वैल्यू क्या है? आंसर में ये है. आंसर इक्वल्स टू 0 0 0 1 0 0. इनिशियली n का वैल्यू क्या है? 1 1 0 1. Sorry. 1 0 1, right? So now this is the answer value. Now I'll left shift the answer. That is moving it in this direction. That is 1 0 1 0. And I'll do OR with whatever the value you got. That is n ampersand 1. यहाँ पे इस केस में 1 आया, right? So I'll OR it with 1, right? And if I put it into answer, you can see. You can see if I'm ORing it, यहाँ पे I'm setting the bit of 1, right? So in this way, I'll be getting it in this way. Can you see कि जैसे जैसे ये जा रहा है वैसे वैसे I'm putting it inside answer. I'm shifting it towards the left and ORing the last digit. मतलब इसका last digit को मैं इसका last digit बना रहा हूँ by moving it to the left side. I am right shifting in n, ठीक है? But I am left shifting in answer. कैसे काम कर रहा है? एक और बार without the algorithm let me tell you, ठीक है?
अगर ऐसा है कोई वैल्यू, ठीक है, ये n है, राइट। नाउ लेट मी विदाउट द एल्गोरिथम टेल यू ये आंसर है, ठीक है, आंसर 0 है, सब 0 है, ठीक है। मैं ये बिट देखता हूँ 1 है, ठीक है, सो आई विल पुट दैट इनसाइड दिस, ठीक है, बाय मूविंग दिस थिंग टुवर्ड्स दिस, ठीक है। तो इसको मैं 1 कर दिया, अभी मैं दिस गाय को शिफ्ट करूंगा राइट साइड, तो इट इज गोइंग टू बी 0 1 1 0 1 1 0, राइट शिफ्ट किया, ठीक है। तो मैं इसको करने वाला हूं, राइट, यहाँ पे 0 है, राइट, सो आई विल लेफ्ट शिफ्ट दिस, ठीक है, इसको लेफ्ट शिफ्ट करूंगा और ये 0 को मैं लेके आऊंगा, राइट, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक 5 बिट्स होंगे, एंड देन 1 यहाँ पे होगा, देखो मैं लेफ्ट शिफ्ट किया, एंड देन 0 को यहाँ पे लेके आ गया, अगेन इसको राइट शिफ्ट करने दो मुझे, राइट, इसको राइट शिफ्ट करूंगा, 0 0 1 1 0 1 1 आएगा आंसर, राइट। लेकिन मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूंगा 1 0 एंड लेट मी पुट दिस 1 हियर, आर यू गाइस गेटिंग हाउ आई एम राइट शिफ्टिंग इट एंड चेकिंग की क्या वैल्यू क्या है, और इसको लेफ्ट शिफ्ट करके मैं उस वैल्यू को यहाँ पे रख रहा हूँ। डोंट यू थिंक मैं ये 1 1 1 को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर पाया यहाँ पे भी, ठीक है, लेट मी डू इट अगेन, ये यहाँ पे है ना, सो लेट मी राइट शिफ्ट इट अगेन, ठीक है, इट विल बी 0 0 0 1 1 0 1, दिस इज अ राइट शिफ्टेड वैल्यू, एंड इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, राइट, इट इज गोइंग टू बी 0 0 0 1 0 1, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर अगेन, इसको मैं वापस राइट शिफ्ट करूंगा, इट विल बी 0 0 0 1 0 1, राइट, एंड इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा और यहाँ पे जो वैल्यू उसको रखूंगा यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी 0 0 1 0 1 0, एंड लेट मी पुट 0 हियर, करेक्ट। इसको मैं वापस राइट शिफ्ट करूंगा 1 1, ठीक है, आई शिफ्टेड दिस थिंग, राइट, आई शिफ्टेड दिस थिंग टुवर्ड्स द राइट, एंड इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा 0 1 0 1 1 0, और यहाँ पे जो वैल्यू वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एक और बार राइट शिफ्ट करूंगा 6 टाइम्स, ठीक है, हो गया, अब 1 यहाँ पे आएगा, राइट, एंड लेट मी डू द सेम थिंग हियर, हो गया ब्रो, मेरा आंसर बन गया। इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं इसको राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, गेटिंग व्हाट इज द वैल्यू, इसको लेफ्ट शिफ्ट करके उस वैल्यू को मैं एलएसबी में डाल रहा हूँ, आई एम सेटिंग द एलएसबी टू दैट वैल्यू, यस यस करेक्ट प्रीतम, आई एम सिंपली कॉपिंग द बिट इन द रिवर्स ऑर्डर, करेक्ट। तो अब देखो मेरा फाइनल आंसर देखो, ये आंसर है, डोंट यू थिंक मेरा रिवर्स हो गया आंसर पूरा एकदम, करेक्ट। सो हाउ एम आई डूइंग इट, आंसर को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं एक बिट से, एंड ऑरिंग इट विद द लास्ट बिट ऑफ एन, इसको मैं आंसर में असाइन कर रहा हूं, दिस इज द स्टेटमेंट, आंसर को लेफ्ट कर रहा हूं एंड सेटिंग द बिट ऑफ एन, करेक्ट करेक्ट, dependo I'm just using the mask to extract the LSB, right, so this is the mask, right, I'm extracting the LSB, whatever is the LSB I'm putting it in the LSB of this by left shifting whatever the previous answer is, क्यों? how beautiful it is, right, I will code this, don't worry, इसको मैं कोड करने के बिना आगे नहीं बढ़ने वाला, लेकिन बताओ ये एल्गोरिथम समझ में आया सबको कि नहीं, like the way I'm doing it, is that clear for everyone or not, is the main question। ऐसे मैं 32 बिट्स तक करता ही रहूंगा, या ये बिट जब तक 0 हो जाएगा तब तक करता रहूंगा, करेक्ट। है कि नहीं, मैं काइंड ऑफ लाइक ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे ऐसे डाल रहा हूँ, बस ऐसे मूव करके ऐसे डाल रहा हूँ, रिवर्स हो जा रहा है ना, करेक्ट।
Let me code it. Okay, it will be much clear for you. Okay, so let me run a loop for I equals to 0 से लेकर I equals to 32 bits तक. मतलब 32 times this loop will run. ठीक है. Now let me think कैसे. ठीक है. Let me just have an answer before this. It is 0, right? And let me just have result की जगह let me just mark it as answer क्योंकि answer के साथ ही किया. Answer initially 0 था. ठीक है. तो आंसर को मैं आंसर में डालूंगा by shifting it left and also putting the pipe and getting what is the value of last LSB n ampersand 1. बस ये हो गया. बस ये करता रहूंगा and I'll be shifting the left value. Correct? How? It is an unsigned, right? So let me do an unsigned shift. Correct? Guys, let me see this. चल रहा कि नहीं? I'm missing the statement, written statement. Let me answer it as answer. देखो, the code is very simple. ठीक है? It's just the depth in the statement of how you're shifting it and how you're doing this thing. If you want to do it in a different step, you can do that. ठीक है? इसको मैं अलग-अलग भी लिख सकता हूँ. ठीक है? तो मैं कैसे लिखूं अलग-अलग? ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आंसर को मैं एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर लिया. ठीक है, अब मैं आंसर को उस वैल्यू दूंगा n ampersand 1 वैल्यू दूंगा. क्यों गाइस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अप्रोच? इज दिस करेक्ट? I left shifted it first and then put it. ठीक है, let me submit it and check if it is working or not. कोई पूछ रहा है कि can we do it with n is not equals to 0 or not? Can you do it guys? Tell me. बताओ क्यों नहीं ब्रो? ये चीज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? I'm getting it as a wrong answer. Why? Can you guys tell me why? Hello? Right? 32, I don't think 32 is a problem till last set bit, right? Correct. ठीक है. So, tell me, you guys are not clear yet. Why? Like, you should know. N is not equals to 0 is a number. N is not a bit. Guys, be careful. So why are we not able to do it? Right? So देखो, like the moment it becomes 0, right? Try to think of this thing. हाँ, we need to reverse all the 32 bits. I agree with you guys. ठीक है? So, but I'm just asking कि if at all the values are zeros, ठीक है? अगर बहुत सारे zeros है, and if you're shifting all these things, ठीक है? ठीक है? So if you're shifting all these things and putting it here, ठीक है? So you should also put these zeros at the end, right? So it's not that you can get away with these zeros, correct? So shifting will happen only till this point, okay? But you should do till all the 32 elements. If you do it in this way, correct? Guys, is this making sense? So these zeros, these extra zeros, right? You need to put them at the end also. So you need to run the loop till 32 times. Do you guys agree? समझ में आया? So 32 times you should shift it. Okay? So that is the reason why I put 32 initially. Okay? Or in just one statement, you can do it. Instead of these two statements, I can just do it in one statement. That is answer equals to answer को left shift करो and do this thing. Agreed?
line number 8 क्या हो रहा है? See, in this line number I'm just setting the LSB. ठीक है? So this is how you set, right? I told you this thing multiple times. If you want to set a bit, ठीक है, you'll just do this thing. मास्क में जो भी वैल्यू होगा, that value will be set. Correct? तो मास्क की जगह I'm just doing this thing. This will be the mask. अरे 1 है तो set होगा. So even for the negative value it will work, ठीक है? Because you're doing it as if it's a negative and क्या बोलते हैं इसको? As a unsigned value, है ना? And for a negative value it will work. Because तुम क्या कर रहे हो यार? इसको we are just checking this value and putting this value here. ठीक है? वैसे बार बार इसको right shift कर रहा हूँ और इसको left shift करते जा रहा हूँ and putting it. So I am kind of like putting it in this way. एक एक करके वैल्यू को निकाल रहा हूँ, एक एक करके वैल्यू को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ. Correct? 0 तो 0, 1 हो तो 1. In that way I'm making the answer, right? Are you guys able to understand कैसे मैं ऐसे पुश करके ऐसे पुश कर रहा हूँ? Guys, एक बार सोचना पड़ेगा. अगर अभी भी समझ नहीं आया, you need to think a little. ठीक है? Like this is how I'm telling कि how you're pushing this in this way and putting it in this way. ठीक है? यही चीज करना है हमें. ठीक है? तो एक बार सोचो इसके बारे में. Can we just put after? You can't do that, चिराग. ठीक है? क्योंकि you're overwriting that bit ना. जावा में signed unsigned नहीं होता. ठीक है? So let me just take this example and explain you that thing. ठीक है? So we have this question in the portal, right? Regarding this thing, flipping bits, right? So देखो, if I had done this question, ठीक है, एक बार submissions में दिखाता हूँ. Where is the submission? ठीक है. So like if I had done this question in Java, I'll be getting the correct answer. Flip कैसे करोगे guys? How will you flip it? Can anyone tell me? By doing this thing, right? Hello? By doing the ones complement, right? कोई value है n लो, उसका n's complement करो, right? So I'll be getting them as negative values क्योंकि ये value possible ही नहीं है Java में. It will be a negative some value, correct? Right? So in this particular thing, ठीक है, यहाँ पे we can't use Java to solve this question because the question is framed that we are checking the absolute values. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज चेक नहीं करेंगे, तो वैल्यू का बाइनरी नंबर चेक करेंगे. उस केस में चल जाएगा. सो जस्ट बिकॉज द रीजन वाई दिस हमारे पोर्टल में ऐसा बना हुआ है, इसीलिए ये वी कांट डू दिस इन जावा. ठीक है, एक बार सी प्लस प्लस में किया मैंने, देखो. लाइक आई एम टेकिंग द इंटीजर, दिस इज द इनपुट. ठीक है, इनपुट ऐसे लेते हैं, एन का वैल्यू मिल गया. आई एम टेकिंग द इनपुट, दिस इज ऑल्सो एन इनपुट, बट आई एम टेकिंग इट इन द अनसाइंड इंटीजर. देखो इसको, देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड अनसाइंड. जावा में नहीं है, सी प्लस प्लस में, राइट? सो व्हेन आई एम डूइंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, ठीक है, आई एम गेटिंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज. अगर मैं यही चीज मैं जावा में करूंगा, आई विल बी गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू, right? So what is the question? Question is that you're supposed to flip all the bits. हाँ, लॉन्ग लेकर कर सकते हैं क्या? लॉन्ग लेकर करोगे, ठीक है, देन यू कांट डू दिस थिंग ना, यू कांट डू द नेगेशन ना ब्रो, क्योंकि लॉन्ग में बहुत सारे जीरोस होंगे आगे, वो भी तो वन बन जाएंगे इफ यू डू दिस थिंग. लॉन्ग नहीं ले सकते हो भाई. अगर लॉन्ग ले लिया ना, लॉन्ग का 64 बिट्स होता है, ठीक है, ओनली 32 बिट्स आर रिलेवेंट टू यू, बाकी 32 बिट्स में सब जीरोस होंगे, राइट? तो वो सब तो वंस बदल जाएंगे ना if you do the negation, right? So you can't do it using negation. ठीक है, you can do it in a different way. ठीक है, तो सोचो, how can you flip all the bits, guys? How can you flip all the 32 bits? Can you guys tell me? हाँ, correct. बताओ, how can you do it? हेलो, zor ना.
So XOR it with a value which is having all ones. All ones का value के साथ अगर तुम XOR कर लिए इसको, right? Any value को, you can get the value instead of this negation. Do you agree with my statement? But how, the question is how to generate it? How do you generate it? That is the other question. Correct. ठीक है, तो इसको जनरेट करने के लिए क्या करोगे? 10 पावर 32 like you can do that, that will be max int. ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से -1 is the answer. ये -1 है. ठीक है, but I'll tell you how to do this, how to generate this type of masks. Just a second. ठीक है, so let me just show you, ठीक है, how this is done. ठीक है, so I think we have done couple of questions. ठीक है, we have done reverse bit question. ठीक है, we have done the coding. ठीक है, now we have flipping and we have this thing, right? We have swap odd even. ठीक है, we have flipping. ठीक है, flipping कर रहे हैं हम basically. ठीक है, तो guys ये चीज देखो, ये क्या है? ये what is this thing? ये कुछ नया, कुछ अजीब सा लग रहा है ना? What is this thing? Can you guys tell me what is this thing? किसी को पता हो तो बता दो. One, two, three, four, five, six. 6 into 4 is 24. Okay, good. So it is, so this is the value. Okay. So what is this value? It is looking very ajib, right? What is this? Correct. So let me tell you, see this thing carefully. अब तक you guys are doing it in a very small manner. ठीक है, अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, just tell me this thing. अगर मैं बोलूंगा भाई, bro, can you create a mask with all ones in it? Can you do it? How can you do it? Don't do this thing. How can you do it? I want a mask, 32-bit mask, all ones in it. बहुत सारे वैसे करने के लिए, बहुत सारे. ठीक है, अगर मैं ये चीज समझाया भी नहीं होता तब भी तुम लोग को करना चाहिए ये चीज. हाउ डू यू डू इट? विभूति, इफ यू डू 2 पर 31, ठीक है, it will only give me one value and all the zeros. Do you guys agree? कैसे करोगे? एक बार सोचो, सोच के बताओ मुझे. Negation of 0, yeah, you can do that. Use shift 32 times. Correct, you can do that. 2 पर 32, someone is saying this. 2 पर 32 मतलब 32th value 1 करा, right? And anyway, this won't get into integer. पहली चीज तो ये integer में नहीं जाएगा क्योंकि integer में valid ही नहीं है ये चीज. It is out of the bound of integer. ठीक है, so you need to use long, right? And then if you do -1, ठीक है, what will happen is all these values will become ones and this will become 0. Do you guys agree with this statement? Hello? This is n and this is n-1. Correct? How शुभ, how यही चीज बता रहा था कल से कि if you subtract any value, उसका least significant signed bit will become 0 and all these values will become 1. ये चीज बता रहा था कल. Yeah, Vibhuti, you can do that. You can do negation. That's good. That is one of the way. ठीक है, हाँ भरत, you can do that also. 10 पर 33 -1 करोगे, ठीक है, तब भी काम करेगा. लेकिन यार थोड़ा शांत हो जाओ क्योंकि और भी तरीके हैं करने के लिए, है ना? This will be going out of the bound of index integer. Correct? You can't make it. Even this will go out, right? So what I'm thinking is, कि this is the maximum integer, right? Int max है, ठीक है. तो just imagine guys, अगर मैं बोलूंगा don't do these things, how will you do it? मतलब अगर तुम्हें चाहिए 10 numbers continuously from 0 to 1, how would you do it?
ठीक है. So this is one way. Let's keep it aside. And अगर मैं पूछूंगा बोले 10 वैल्यूज चाहिए, मतलब एक इंटीजर में सब जीरो चाहिए मुझे, लेकिन लास्ट 10 बिट्स 1 चाहिए, कैसे करोगे? कैसे करोगे गाइस? सोचो इसके बारे में. सिंपल है ना. लास्ट 10 बिट्स तुम्हें क्या चाहिए? You want all the last 10 bits to be ones, right? So why don't you make this person, that is 1, and then why don't you make this person which is having the power of 2 part 10, right? मतलब 2 part 10 minus 1 लिखो, मिल जाएगा ना ये? हेलो. 2 part 10 के लिए like you can write it as this one also. 1 shifted 10 times, ठीक है, मतलब 1 होगा, 10 zeros होंगे, right? If you do minus 1 to it, then ये 0 हो जाएगा and everything else will become ones. Do you guys agree with this statement? ध्यान से सुनो, मेरे बात सुनो बस अभी, ठीक है? Listen to me, ठीक है? Listen to me. I've created this is the second method which I'm getting, like this is the same method as previous one. एक और method है, सोचो इसके बारे में कि जैसा हमने the way we have generated that value, why can't we do it again? Why can't we run a loop for 10 times and let me just have an answer that is 0? Why can't we have this answer को left shift करते जाओ and 1 के साथ और करते जाओ? Don't you think this thing will work? Hello? This is what we were doing with the reverse integer, right? यहाँ पे 1 की जगह n%1 कर रहे हैं क्योंकि 0 भी कभी कभी रखना पड़ता है ना? ये भी कर सकते हो तुम. वैसे तुम 32 बिट्स के लिए भी कर सकते हो, है कि नहीं? ऑल द 32 बिट्स के लिए यू कैन जनरेट दैट. या सोचो ये तो मिला है, राइट? ये दोनों को भी और कर सकते हो तुम, तो सब वंस नहीं बन जाएंगे? या जैसे कोई बता रहा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 भी ले सकते हो तुम, दैट इज नथिंग बट -1, ठीक है? ये -1 आंसर, ये सब वंस का वैल्यू है -1. एक बार सोचना कैसे है. क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट 1 देता है ना, तो इट इज -1. Guys, just see how many ways you have to do this. So is the ways clear for you all कि कैसा हमने किया? Let me just trigger another poll just to check the. It is still unclear for single digit people. I think it is increasing now. Okay, tens of people are not clear with it. Okay, which part are you clear? Is the step 1 है not clear, step 0 not clear है, या step 2 not clear है, या step 4 not clear? कौन सा तरीका तुम्हें समझ नहीं आया? Can you guys tell me which step your मतलब which part of generating such bit masks you are not understanding? 2 and 4, ठीक है? 4 वाला समझ नहीं आ रहा. 4 है ही नहीं यार, 4 तो लिखा ही नहीं मैं. I think you by 4 you mean this. Hello? हाँ 3 ना, तो 3 में देखो यार, 3 में what am I doing? So did you guys understand the reverse integer? रिवर्स बिट्स वाला क्वेश्चन है. उसमें क्या कर रहे हैं हम? जो वैल्यू है हमारा जीरो से सब, ठीक है, पहले सब जीरो से, आई एम लेफ्ट शिफ्टिंग इट एंड एडिंग 1 टू इट, ठीक है? तो 1 मिला तो वापस लेफ्ट शिफ्ट करो, 1 ऐड करो, मतलब ये गई. वापस लेफ्ट शिफ्ट करो, ये जाएगी, ऐड 1 करो. वापस लेफ्ट शिफ्ट करो, ये गई, 1 ऐड करो. वापस लेफ्ट शिफ्ट करो, ये गई, 1 ऐड करो, right? So this is what I'm doing, right? Guys, just see this. I'm left shifting it and doing OR with 1.
correct? I can add one also, even that is possible. I can do this thing also. Do you agree, guys? It's not just or, you can add also because it is one. ये टू वाला समझ नहीं आ बोल रहा लोग, ठीक है गाइस, आई टोल्ड यू दिस थिंग राइट. अगर कोई नंबर है ऐसा जिसका वन बिट है एंड इफ यू डू n माइनस वन टू इट, ठीक है, इट विल जनरेट द सेम till this point, and the least significant set bit will become 0 and all the other values will become ones. This is what we've been discussing since 2 days, correct? तो ये जनरेट करो, एक बिट ज्यादा जनरेट करो और उसको -1 कर दो तो ये वैल्यू मिल जाएगा. शिवान, so is this thing clear now? Hello? To people who is not clear, it's not clear, you guys explain, ठीक है? तुम लोग respond करो chat पे. To the people who understood it, cool. क्या चीज समझ नहीं आया इसमें? Because of operator or operator one is the answer that we are left shifting, correct? ठीक है, तो देखो, ये देखो, like just see this, ठीक है, इसमें you're doing the same thing. You're like, what is this operator? This is one's complement. Someone is asking, I think he missed the class, okay? Whatever the bits are, it will just flip. So what is this method? What is this method? ये क्या है? ये तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या है. I'll explain you what it is, ठीक है? So any number that is prefixed with 0 and x, मतलब o and x, it is an hexadecimal value. It is a representation. ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है. उसके बाद जो भी है ना, आई टोल्ड यू हेक्साडेसिमल में यू हैव वैल्यूज लाइक 0 1 2 9 तक होगा. उसके बाद ए आएगा, ए इज 10, ठीक है, बी इज 11, सी इज 12, डी इज 13, ई इज 14 एंड एफ इज 15, करेक्ट? राइट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर तुम्हें कोई वैल्यू मिला, सम वैल्यू लाइक एफ, ठीक है, एफ ए, right, some value like this, okay? So and you write ox, this is the value, okay? So if you want to convert this into a binary value, you need to convert it into decimal and then you'll convert it into binary, right? So what you will get at the end is कि these values can be understood as 4 digits of binary. सोचो इसके बारे में. Like what is this value? 1 1 1 1, this is nothing but 15, right? So 15 ही max हो सकता है, like that is this guy. So he can be directly written as 1 1 1 1. He can be directly written as 1 0 1 0. He can be directly written as 1 0 1 0. This is the binary representation of this. क्योंकि see 16 बेस में एक वैल्यू पे 16 like 0 to 15 हो सकता है, right? But to achieve the same thing, you need 10 digits to you need 4 digits in binary. In binary, you need 4 digits to achieve the same fixing of the value, right? 4 digits in binary is equal to 1 digit here. So each digit को I can directly convert it into its binary form. जैसे 15 है, 15 को मैं बाइनरी की तरह कन्वर्ट कर दिया. ये 10 है, 10 को मैं बाइनरी की तरह कन्वर्ट कर दिया. ये 10 है, इसको मैं बाइनरी की तरह कन्वर्ट कर दिया. दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. यू कैन टेस्ट इट. चेक कर लो इसको, डेसिमल में कन्वर्ट करके वापस बाइनरी पे टेस्ट कर लो. यू कैन फाइंड. गाइस
अभी मैं कहीं देखा ओ एक्स एफ 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 करके, इट मीन्स दैट माई आंसर इज नथिंग बट ये 4 1 देगा, ये 4 1 देगा, ये 4 1 देगा, एंड दिस गाय ऑल्सो विल गिव 4 1s बिकॉज 4 1s मीन्स 15, राइट? F is nothing but 15, right? So you can write it as 1 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 1, and all the other are zeros. You can see that 4 into 4 is 16. मतलब 16 1s है मुझे मिला, and 16 zeros मिलेंगे, right? Correct. But if you put 8 Fs here, everything will be 1. Guys, सोचो इसके बारे में. Like you are generating it in a constant time by knowing this way of converting an hexadecimal value into a binary value. Correct. So in this hexadecimal, like this guy, you can directly convert it into the first 4 bits. Okay. This guy can be directly converted into next 4 bits. This guy can be converted into next 4 bits. Okay. This guy can be converted into next 4 bits. Do you agree with this statement? अगर मैं OF मतलब OX मतलब OX को इग्नोर करो, सब A लिख दूंगा, क्या होगा? 8 A's. You can only have 8 digits, right? Because each digit is of 4 digits. It will make 4 digits of binary values. तो 8 है तो सॉरी 8 नहीं, कितना होता है 32 के लिए? हाँ 8 ना, 8 into 4 is 32, right? So I can only have 8 digits. Do you guys agree with this? Meaning of OX is this is just representation of a decimal value. Sorry, it's a representation of hexadecimal value. अब देखो इसका वैल्यू देखो, it is nothing but 1010. इसका 1010, इसका 1010. This guy 1010. This guy 1010. This guy 1010. This guy 1010. देखो ये, डोंट यू थिंक तुम अल्टरनेटिव नंबर्स प्रिंट बना लिया गाइस? अगर मैं ऐसे लिखूंगा OX 2 2 2 2 2 2 2 2, इसका वैल्यू क्या होने वाला है? इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है? कैन यू गाइस टेल मी? कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है 0012 और आई एम 0010, राइट? So no, Mohammed Shabin, that's not how it is. It's not 1010. ठीक है, it is going to be like this. ठीक है, 0010, 0010. Each digit will contribute to 4 digits. Don't 1010 मत करना, वो बहुत गलत हो जाएगा. Each digit will contribute to 4 digits because ये hexadecimal है, एक एक बंदे के पास 16 का पावर है, right? So 4 digits need to be used. Guys, clear है सबको ये चीज? So सोचो, like instead of going for this methods, you can hard code the mask. This is a mask that I have created. First 16 bits को 16 रखा, next 16 bits को 0 रखा by using this, right? I've created a mask with just alternative numbers. Alternative numbers के साथ बना लिया मैंने, करेक्ट? इसको मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो मुझे और अल्टरनेटिव नंबर्स मिल जाएगा, मतलब 0101 मिल जाएगा, है ना? इसको मैं राइट शिफ्ट कर दूंगा तो बस OX एग्जैक्टली मीन ये करता है कि वो रिप्रेजेंटेशन है, बस वो ये बताता है कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, बस इतना ही है. इस पे इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है? इसको इग्नोर कर सकते हो तुम जब भी देखोगे. अंडरस्टैंड, इट्स एन हेक्साडेसिमल वैल्यू. व्हाट इफ वी हैव 9 2s? ठीक है, आई टोल्ड यू राइट, वी कैन ओनली हैव 8 2s. वन वो इंटीजर का लेवल पार कर लेगा, करेक्ट? सो इट विल बी 36 बिट. 8f is a negative number. No, it's not a negative number. 8f क्या है,
राइट. f का मतलब है 1 1 1 1 and 8 का वैल्यू क्या है, 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज नथिंग बट दिस, राइट. सो इट्स अ पॉजिटिव नंबर क्लियरली, all are zeros, right, and it's a positive number, right. MSB देखो ना, it will only start from ones place. तुम इसको शायद तो you can just convert this thing into like this 8 into 16 plus 15 into 16 power 0. एक बार करके बताओ इसका नाम क्या है, what is the value of this 8 into 16 plus 15 into 6 power 0. Can anyone tell me? Use a calculator and tell me. हाँ bro, अजय यार, like I was telling, right, you can use any of these characters A B C D E F, कुछ भी यूज कर सकते हो. हाँ, we'll do this, don't worry. It's 143, right, है ना, कोई 143 बोला, ठीक है. अब 143 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल के देखना, you will be getting this. Right, so we can use this for multiple purposes. You are able to create a mask, right. So you can easily say कि मेरे पास 32 बिट्स है, ठीक है. फर्स्ट 4 बिट्स को मैं एक वैल्यू से कंट्रोल कर सकता हूँ, नेक्स्ट 4 बिट्स को आई कैन कंट्रोल इट यूजिंग अनदर वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल, नेक्स्ट 4 बिट्स को आई कैन कंट्रोल इट यूजिंग अनदर डेसिमल. So I can create exactly what I want just by using these numbers, just using the hexadecimal value. Correct. So now let's talk about this question. Swap. Where is this? Swap all even and odd bits. क्या मतलब है इसका? It means that कि जैसे कोई वैल्यू है तुम्हारे पास 0 0 1 0 0 1 1 1, right? So it says that I need to convert it into the swap bits, right? Let me do it. Okay. Let me just write this question. 0 0 0 1, right? Let me just write it with another pen so that it'll be clear. 0 1 1 1, right? So I've just used red for even bits and yellow for odd bits. Do you guys agree with my statement? Hello? Correct, guys? Right? See this odd और even का मतलब क्या है? Like आगे से odd लेना या पीछे से odd लेना, whatever. I just need to check that. Like it's according to the question ना कि आगे वाला कौन सा है, पीछे वाला कौन सा है, right? So you can see that since every even position is swapped with adjacent bit on the right side, every odd bit is swapped with the adjacent bit on its left side. ठीक है? Just consider that. अभी मुझे like I need to write the same thing with these bits before this, right? So it is going to be something like this. And let me write this into this. Right? So this is a value n. Okay, this is the answer. Okay, what am I doing? I'm just swapping this bit with this bit, swapping this bit with this bit, swapping this bit with this bit, swapping this bit with this bit. Correct. And whatever the answer you're getting, you are supposed to return it. This is the question. Is the question clear? Guys, let me raise another poll just to check key. Did you guys understand the did you guys understand the previous concept of converting a hexadecimal value into a binary value, right? Every 4 values, every 4 bits are one character's responsibility. ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना सबको? Every 4 bits from the 32 bits are responsible for one character in hexadecimal, and they will be filling from one's position. ठीक है, I can see 90% of the people understood. ठीक है, तो people who didn't understand, ठीक है,
थोड़ा कोशिश करो, ठीक है, like you'll be getting it. ठीक है, so how do we do this guys? Can anyone tell me how to think on this thing? तो एक तो मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन वो लेबोरियस होगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब यू आर डूइंग एग्जैक्टली हाउ इट इज टोल्ड, ठीक है, मतलब तुम एक्चुअल में एक एक बिट पे जाओगे और x प्लस बिट पे वैल्यू सेट है कि नहीं, स्वैप द, ऐसे करना होगा, करेक्ट. इंस्टेड ऑफ दैट, कैन यू थिंक ऑफ यूजिंग अ मास्क टू डू दिस? एक बार लेफ्ट शिफ्ट करके एक बार राइट शिफ्ट करके, नो इट इज नॉट पॉसिबल ना. सी दिस थिंग, इफ यू आर गेटिंग दिस वैल्यू एंड इफ यू आर राइट शिफ्टिंग इट, ठीक है, तो वैल्यू ऑलरेडी खत्म हो गया, ये वन गई कहीं और, राइट, वन कहीं और गई, करेक्ट. अब मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा इसको वापस, तो इट विल बी अगेन बैक टू दिस वैल्यू, राइट. यू लॉस्ट सम वैल्यू, यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग, ठीक है. तो सोचो इसके बारे में कैसे करें इसको. You can traverse to the bit, definitely, Mohit. Okay. Ankit, like I know that this is correct, but how this is correct? Can you explain? Right. So what Ankit says is, कि he'll create a mask. Okay. What Ankit says is, he'll create a mask only for odd values. मतलब, like something like this. Yellow odd है ना? So he'll create a mask like this. है ना? So only the yellow values के लिए he's create as a mask. मतलब देखो, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे. He has created a mask something like this, ठीक है, जो ये बताएगा कि यहाँ पे बिट सेट है कि नहीं. Remaining all the values will become 0. So if we do this ampersand with this mask, bitwise AND, this value will become 0. This value will anyway be 0, right? So this value will also become 0. This value is anyway, even though it is 1, it will become 0 because you're not doing it. This value is also 0, right? This value, even though it is 1, it will be 0. This value will become 1. And this value will become 0, right? So you only have one bit that is set at an odd position, ठीक है, ये odd position है, odd position पे only this bit is set. अभी सोचो guys, now you have n value again, ठीक है, ठीक है. Now इस बार I created a mask in this way कि these values are covered, rest all are 0. Now these values are covered, this value, and this value, right? So if you do n ampersand mask with this, you'll be getting zeros at the odd position anyway, right? So let me just write zeros at the odd position anyway. But at this position, you'll be getting exactly what it is present. So यहाँ पे you'll be getting 1, यहाँ पे you'll be getting 1, यहाँ पे you'll be getting 1. So I kind of filter, एक filter की तरह use किया to get all the odd bits, to get all the even bits. देखो, you only have all the even bits only here. You can see only red values है ये सब. And यहाँ पे you only have all the odd bits using these filters. Let's just for now just try to see this. I kind of filtered this out, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, एक तरफ से मैंने इसको ऐसे बना दिया कि I only have these values, ठीक है, मतलब 0 0 0, right, these are zeros, right, and even 1 is also 0, right, this is also 0, and 1 is also 0 again, and then 0 1. But on the other hand, even bits को I just filter only the even bits. I only filter the even bits, that is 0 0 0, this will be 1, just देखो यहाँ पे 1 है, doesn't matter what this is always 0, right, and इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, and इसको 1 कर दिया, because I'm just having the even bits in this position,
ठीक है, ओनली इवन बिट्स, एंड इस पोजीशन में आई ओनली हैव ऑड बिट्स. ऑड पे क्या क्या वैल्यू सेट है, ऑड पोजीशन पे क्या क्या वैल्यू सेट है. हाउ डिड आई अचीव इट? बाय क्रिएटिंग अ मास्क where all the ones are set in the odd position, and ones are set in even position. यहाँ पे सब वन सेट किया. You know how to do this, right? You guys know how to do this, but I'm just, despite of whatever the odd, like इस case में whatever the even values are, I'm just making them zero deliberately. Wantedly I'm making them zeros, even though they are not zeros, right? But यहाँ पे I'm making deliberately all the odd values zero. This I'll only be having even values. Here I'll only be having odd values. Am I making sense, guys? Hello? Did it go out of your head? Like this is over for you? ज़्यादा हो गया? थोड़ा सोचो, ठीक है? Take some time, ठीक है? How you're creating a mask, ठीक है? A mask like this. That is the question, right? Another mask like this. ये mask बनाना तो बहुत सिंपल है. Now you guys are smart, ठीक है? अभी तो तुम कर लोगे, ठीक है? लेकिन इसको यूज करके ओनली ऑड पोजीशन पे क्या क्या वैल्यूज है, आई एम गेटिंग दैट. इसको यूज करके ओनली इवन पोजीशन पे क्या क्या वैल्यूज है, आई एम गेटिंग दैट. मतलब क्या क्या वैल्यूज है, मतलब क्या क्या वैल्यू सेट है, राइट? सो दिस इज मास्क इवन एंड दिस इज कॉल्ड मास्क ऑड. ब्रेन स्टैक ओवरफ्लो गाइस. हाँ, so no worries man, ये थोड़ा like it will give stress on your brain little because this is the first time you're making a mask like this, right? You're just having the ones at an odd position because अगर मेरा वैल्यू में odd position पे कोई one है तो that will be filtered out and I'll be getting, and even position में हमेशा zero ही रहेगा, right? Same thing I'm doing even positions पे always zero, and यहाँ पे odd position पे always zero. Just see this guys, right? तो always zero, लेकिन अगर odd position like even position पे if there are any ones I am getting that one. Now odd को I can shift right and even को I can shift left and I can odd or both of them to get the union of both of them, correct? Right? So in a way you're using this particular thing as a filter. See, ध्यान से देखो, you're using this particular thing as a filter to get only odd values to be set. बाकी even हो तो let them go, ठीक है? The same way using this filter you're only getting even values, ठीक है? Even values positions पे जो भी ones है उसी को ले रहा हूँ, और odd को अगर ones भी हो, देखो यहाँ पे one है odd, लेकिन मैं zero कर दिया क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? Now what I'll be doing is I'll be left shifting this, क्योंकि मुझे even को left shift मतलब even positions को left करना है, right? You can see that kind of left हो गया ये सब, right? And odd को right करना है, correct? You can see this thing. This is called swapping, right? Even को I'm shifting it towards left, and odd को I'm shifting it towards right, and then, ठीक है? Now think of this thing. Now n mask even करूँगा, right? I got a value that is 3 zeros and alternatively, right? And mask odd करूँगा, I'll be getting all zeros and only one, correct? Now I'll left shift this thing. It will be becoming as 0 0 1 0 1 0 1 0, right? And I will right shift this, क्योंकि you see
you can see that this is what swapping is, right? You're right shifting this and you're left shifting this, correct? So if you do that, it will be all zeros and one will be here. Now if you OR them both, bitwise OR करोगे दोनों को, ठीक है, bitwise OR करोगे, you'll be getting what is the union of all these things, ठीक है? क्योंकि अभी even position has become odd values and odd position has become even values. I kind of pulled out all the even values, I kind of pulled out all the odd values, दोनों का position change कर दिया, and I'm combining them. See this, if I combine them, OR कर रहा हूँ, OR operation, bitwise OR, you'll be getting this value. This is nothing but the desired value. देखो guys इसको एक बार, एक बार ही शिफ्ट करेंगे ना, एक बार ही शिफ्ट करेंगे. I'm using this like अभी मैं like I can visualize this if I have some animations, ठीक है? I just pulled out the odd values, I pulled out the even values, दोनों को left और right shift कर दिया, दोनों को combine कर दिया. Just a second guys. Am I audible? Hello. नंबर लॉस नहीं होगा, एक बार तुम खुद से सोचोगे, एक बार लॉस नहीं होगा करके तुम्हें पता चलेगा. Okay, just see this guys. एक बार सोचो, like assume that these numbers are your bits, ठीक है? Some are set, some are not set, like this, something like this, ठीक है? So if you're pulling only the odd values, मतलब only these values you're pulling it out, you're pulling these values out and you're pulling out odd values, you're shifting them right or left and then you're putting back again. This is what you're doing. This is the animation. हाँ हाँ कैमरा ऑन है, जानबूझ के किया हूँ. कैमरा देखो एक बार, देखो, see this, assume that this is a number, ठीक है, with even bits, assume that this is the number with odd bits, ठीक है, some are set, some are not set, ठीक है, something like this, ठीक है. What I'm doing is using a mask with all the bits set, I'm pulling these out and I'm pulling these values out in another variable, I'm shifting them, इसको मैं right किया, इसको मैं left किया, right, and then I'm inserting it in that way. मतलब देखो ऐसे नहीं, ऐसे किया मैंने, जिससे like I'm inserting it again, insert करने के लिए और कर रहा हूँ मैं दोनों को. समझा? like I can't do the animations है ना, but उंगलियां दिखा के I just kind of like एक बार सोचो इसके बारे में, like I use these mask only, इस पर्टिकुलर मास्क पे जीरो का, बाकी सबको जीरो बना दिया मैं डिफॉल्ट. यहाँ पे इवन वैल्यूज को 1 रखा एंड बाकी सबको जीरो बना दिया बाय डिफॉल्ट, राइट? नाउ आई एम जस्ट पुलिंग दीज वैल्यूज, जस्ट सी, आई एम ओनली पुलिंग दीज वैल्यूज. यहाँ पे देखो 1 है, राइट? आई एम जस्ट पुलिंग दैट 1. सी आई एम जस्ट पुलिंग दैट 1, ठीक है? यहाँ पे सबको पुल किया एक्सेप्ट दिस. सी इवन दो इस वैल्यू में ऑड 1 है, बट आई जस्ट पुल दैट आउट, ठीक है? जिससे I'm just getting the even values wherever they are set, ठीक है? अगर जीरो है तो ठीक है, जीरो ही है, ठीक है? यहाँ पे भी जीरो है तो जीरो ही है, right? But I'm just pulled them, I shifted them. How? I shifted these guys to the left by seeing this. Shift ऐसा हो रहा है ना, swap हो रहा है ना. So these guys are left shifted, these guys are right shifted. तो इसको मैं right shift किया. कैसे करेंगे right shift? Simple है, तुम लोग को पता है. ऐसे ऐसे करेंगे. Left shift कैसे, मतलब ऐसे, है ना? Left shift ऐसे करेंगे, right? Now insert them back again by doing the OR. है ना? तो like now the question arises कि ऐसा मास्क कैसे बनाएंगे, right? How do you make this mask? ठीक है, I showed you how to make this mask. तुम एक लूप यूज करो और अल्टरनेटिव नंबर्स पे वंस बनाते जाना, मतलब या दो बार शिफ्ट करते जाना. ब्रो, like using this method, man, देखो you can alternatively, like you can do +2 here and you can do this, right? Or you can do 2 here and you can just do this. You can shift these values by 2 times and then add 1 to it, correct? Or Varna, like I already generated this thing, right? See this? This is a mask that is odd mask.
Don't you agree? Hello? जावा में अनसेट होता ही नहीं है, आई एग्री, बट इवन अ नेगेटिव वैल्यू इज अंडरस्टूड एज इट्स ओनली बिट वैल्यू, है ना? तो इसको ऐसा बना दिया। अब सोचो, हाउ कैन आई मेक समथिंग डिफरेंट देन दिस? हाउ कैन आई मेक, देखो 4 बिट्स है मेरे साथ, ठीक है, मतलब ऐसा बनाया मैंने। सो हाउ कैन आई मेक समथिंग लाइक दिस 1 0 1 1 0 1, इसको कैसे बनाऊंगा मैं? कैन एनीवन टेल मी? I can use this only. I can left shift it and add 1 to it, or right left shift it and add 1 to it, or else I can take this value, that is 5, है ना? हाँ, negation of that, correct, you can do the negation as well. Great man, great, you can take the negation of that as well. One's complement ले लो, correct? Yeah, the same way you generated that, उसको let, like you put 10 right, a right, you will put 5 here. You can do that in that way also. Let me just code it now. Okay, where is this? Yeah, are you guys going to try it? I'll come back and we'll do it. We can go for lunch and we can come back and do it. What do you say? हाँ चिराग, go ahead, ask your doubt. ट्राई करो, ये हो जाएगा यार, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? एक मास्क यू कैन क्रिएट इट इन दिस वे, राइट? ओ एक्स ए 8 एस को रखो, हो जाएगा। दिस विल बी मास्क ऑड, ठीक है? एंड यू कैन डू अ थिंग, मास्क इवन के लिए you can write OX 55555 and all the fives. This is one way usually people do it. या इसका negation ले लो, mask even is equals to negation of mask odd. क्यों? Can you do this, guys? Hello? Right? उसके बाद take the and with it. Right? Yeah, it is not O, it is 0. Correct? लेकिन जो भी है, like this is just a representation. Try this thing, guys. I think someone is asking for the doubt. Let me just unmute him. हेलो। Hi, hi Chirag. हाँ हेलो, आई एम ऑडिबल। बोलो। मुझे ये पूछना था, जो आपने वो 0x करके जो बताया था ना, उसमें मैं ये पूछ रहा था, अगर उसमें जैसे आपने अभी ए लेके 8 एज लिए हैं उसमें, हाँ, तो वो उसमें जो एमएसबी वाली बिट है उस पे भी तो 1 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं होगा? हाँ तो होगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी? देखो यार, मतलब दिक्कत क्यों आएगी? यू आर वर्किंग विथ इट्स बिट्स, राइट? वो नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, तुम उसको प्रिंट करो तो नेगेटिव वैल्यू दिखेगा, लेकिन मैं उसको कैसे देख रहा हूँ? इट्स अ जस्ट अ 32 बिट बाइनरी वैल्यू, है ना? ओके ओके ओके। है ना? इट्स जस्ट अ 32 बिट बाइनरी वैल्यू। उसका बाइनरी ऑपरेशन तो सेम तरह से होंगे। अगर तुम -1 को भी किसी के साथ बाइनरी करोगे या बाइनरी ऑपरेशन करोगे, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसका और इसका, उसका बाइनरी रिप्रेजेंट दोनों के बीच में होगा ना, जो भी होगा। ओके ओके ओके। इट इज लाइक -1, इट इज फॉर यू, है ना? लाइक व्हेन जो यू प्रिंट, ऑपरेशंस होते हैं वो बाइनरी कोड के अंदर होते हैं। ओके ओके बिटवाइज ऑपरेशंस, एवरीथिंग हैपन इन द बाइनरी कोड। तो ओके। उसे पता नहीं चलेगा, तुम प्रिंट करके देखोगे तो नेगेटिव दिखेगा तुम्हें, गॉट इट। है ना? ठीक है गाइस, विल डू इट, ठीक है, ट्राई दिस, ठीक है? Someone has sent the code. Don't send this codes, man, like it is not helping anyone, ठीक है? Try it. You can try another questions, ठीक है? You can try the question of like flipping with, तो like you can't without that. Try this question, we can discuss this if you did, ठीक है? Or try the this question also, query of Zors, ठीक है? After that question, ठीक है? Let me know. We'll have a 20-minute break and don't leave the class. Today is the last class with bit manipulation. सब doubts clear कर लो, ठीक है? आज थोड़ा पुश करना खुद को, ठीक है? And it is 10:70, 20 minutes में 10:70 37. Take some break, do this question. ब्रेक के बाद, मतलब ब्रेक 15 मिनट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन करना, डोंट वेस्ट द टाइम, ठीक है? ठीक है, चले।
Hello. Hi guys. Is there any struggle that you're facing? Hello. Oh, I'm back. Sufficiently. We can't do the flip bit questions in int. We need 32 bits. Int has only 31 bits to store the number, one for the sign. That's not true, Renny. Int has all the 32 bits, but the way we represent the last bit, MSB, is different. So I think we can do it in 32 bits. We can do it in 32 bits. सोचो देखो यार, am I audible? Hello. See, you have 32 bits, right? So you have some 32 bits, right? So all these bits will store values, right? It will be 0, it could be 1, right? So the way it is represented is different, right? The way it could be understood is different when you print it. Okay? It will take the time that and all, right? It will take the 2's complement and all, but it has 32 bits to work on, I think. It will have. I don't think it will have any problem with that. Did you guys try to do this question? Okay, let me just try it. ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो we'll just see whatever we can do. ठीक है, so let me just write it down. So I just need to take one integer, na? So let me just take a scanner object. ठीक है, so I hope you guys are back from the break, है ना? ऐसा तो नहीं है कि you guys are not starting, right? So even if that's the case, I start it. ठीक है, we can discuss it later. Okay, so I'll just have int n equals to sc dot next int. Guys, is this correct? Hello. ठीक है, this is cool. What I am thinking is कि you need to create a mask for the even values, right? So what are even values called or what are odd values called? So should I make the even values move to the right part and should I make the odd values move to the left part? वो चीज अभी मिलना अभी I think that is pending, right? So okay, this is the value called 23. Huh? So let me just think. Swap these values with these values, right? This value with this value, with this value with this value, this value with this value, right? So so swapping this value with this value is nothing but shifting this thing to the right, right? And swapping this value with this value is the opposite, correct? Shifting it towards the left. So these values, like this one, this this one, and this one needs to be left, put to the left values, मतलब left की तरफ मोड़ना चाहिए, है कि नहीं? Is my screen freezed? Hello? No, right? It is working. Cool. So let me just see what is the Java. So you guys are saying Java में कुछ है क्या? We already have it. Yeah, I just need to write the logic. Swap bits. Okay, cool. Great. So देखो, like the point is कि whatever bits are, these bits are, that bit I need to shift to right. Okay. So if I had created, so odd or even, I should be seeing from the back, right? So if I had created 0x a a all 8 A's, it means that a का मतलब है 10, है ना? So it will be something like this. इसका मतलब it is starting from second position, है ना? So second position मतलब this one, right? 0 1 0 1 0 1 0 1, right? So it is like, now let me understand this one as even, ठीक है? क्योंकि यहाँ से देख रहा हूँ मैं, ये odd समझ लो, इसको even समझ लो. So I need to have a something like this, na? Another value, another mask. So I'll call this as even mask. I'll call this as odd mask. Correct, guys. This is the difference between implementation and solution. ठीक है? Implementation में तुम्हें हर detail पे जाना पड़ेगा कि exactly next step क्या है, exactly next step क्या है, right? तो मेरे को पहले even को right मोड़ना है, right? I need to first pull out all the even by using this mask, which I can easily create A's को use करके, ठीक है? Then I need to right shift it. यहाँ पे 0 है, so it won't cause any harm.
So I need to right shift these bits. Do you guys agree with me? Hello. So let me just create a mask that is called as even E mask, right? It is an E mask that is nothing but 0, X and all A's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so this is the mask which I've created. Cool. Any doubts, guys? Right. Now let me create an odd mask, O mask. And this could be, I could write it as negation of that. Okay, I can write that. Okay, shall I write it? Let me just see if it works or not. Like negation of that mask. Guys, are you guys following till now? Right. अभी क्या करना है मुझे? Now I need to get the even bits. ठीक है? तो even bits के लिए let me call it as even. ठीक है? And let me do the bitwise operation of E mask with the number, right? And let me do the same thing for odd as well. And odd mask, O mask. Is that correct, guys? Hello? Is this correct? I got even bits, okay? Even B, let me call it as even B, and odd bits. Now I need to shift the even bits, right? Because you can see that these are even bits, right? These are even bits. Let me just change the color. See, these are even bits. Sorry, these are even bits, right? So these even bits are shifted to the towards the right because यहाँ पे 0 है, right? And these bits need to shift towards the left so that they won't collide, right? I told these things, right? So you need to visualize this just like I told, okay? Just like I told using my fingers, right? So just look into this camera. Like if you picked up, like for example, this is a binary A number, right? All ones or some zeros, right? Some zeros हो सकता है. You picked up all events, you picked up all ones. You shift this to the right and you shift this to the left, and then bring them back, right? And create a new swap array. Correct, guys? है कि नहीं? Hello. So I'm getting this in this answer. I'm getting all the even bits. मतलब even positions पे अगर 1 है तब भी 1 दिखेगा और odd में तो obviously 0 दिखेगा. The same thing in the odd positions. I'm getting अगर 1 है n में 1 है जहाँ 1 है वहाँ 1 दिखेगा and even positions पे 0 दिखेगा. Are you guys understanding what's happening? LSD is 1, then number won't lose, ठीक है? Because देखो LSD 1 है तो odd value में आ जाएगा, तो odd को मैं left shift कर रहा हूँ ना, तो lose का होगा. इसको मैं right shift कर रहा हूँ, इसको left shift कर रहा हूँ, lose कुछ नहीं हो रहा. Think about this thing little deep. देखो अगर least significant bit अगर है, it will be present here, ठीक है? I'm left shifting it, ठीक है? I'm not right shifting it to be get lost. And यहाँ पे least significant bit होता भी नहीं है. Same thing here. I'm right shifting here, correct? And I'm left shifting here. यहाँ पे 0 already, boys. देखो इसको. See the magic. Shit, man! I just removed all the things. Let me just write it again. So it will be 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, right? And if you feel 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 आना चाहिए. इसके लिए, like what I'm doing, like this bit, this one, and this one are called odd, है ना? These are odd, right? So odd के लिए I'll write some, like I need to shift it to the left. Only then it won't lose any property. Correct? Odd को मैं left shift करूंगा और even को right shift करूंगा. So that is exactly what I'm going to do. Even bit को right shift. Should I right shift it or should I left shift it? Yes, should I right shift it, right? And odd bit को let me left shift it, है ना?
Guys, are you following what I'm trying to say? Guys, why is there no response? है ना? Now ये दोनों को मिलाकर, right? ये दोनों को combine करना है. Now I need to take a union of them, right? That is nothing but OR. So let me just mark the answer as even B or odd B. Now I'm combining both the things. Now I need to print it as well. Let me do the honors. Answer, right? Let me print it and let me run the code. Let me give an example of 23 for now. Let me run it. Let me check if it is working or not. Yeah, it is 43, correct? Guys, it is pretty much once you have used sign and then unsigned shift, why sir? Where did we use sign, bro? Shubh? We are just doing it in that way only, na? This is unsigned shift and this is also unsigned shift, right? Malab, like you're not adding any ones that are unnecessary, right? By using this thing. This is kind of safe thing when you're only working in bits. Guys, kuch bolo? This negation, you know this, right? Or instead of this, I can use fives, all fives also. Even that is a good mask. Clear? Let me just submit and check. अगर कुछ fail होगा तो let's see. Yeah, it got passed, right? All the test cases got passed. This is the first time I'm doing, by the way. Right? Guys, थोड़ा सोचो अभी भी समझ नहीं आया तो ठीक है. The code is not that great. It's just the understanding that you have in behind this. Only that is great. ठीक है. So this is the combining part. This is a filtering, like filters. ठीक है. Filters create कर रहा हूँ मैं. First part में creating filters. And here filtering the bits, even bits, odd bits. यहाँ पे shift and यहाँ पे combine. है कि नहीं? ठीक है. और देखो, if you feel that only 31 bits are been used, ठीक है, अगर समझ लो 31 bits सब fill हो गया, 1 1 1 1 हो गया, तो ये 0 होता है ना. If you add 1 to it, then this guy will also become 1 and all these things will become 0. Arithmetics will work the same way, ठीक है, लेकिन this will be a negative value बस. Are you guys getting it? What's the difference between Ashub? Can you unmute yourself? I'm not understanding what you're trying to say. एक बार unmute कर लो खुद को. मतलब एक बार hand raise करना, I'll unmute you. Correct, Ayush. We are swapping all the bits. हेलो सर, गुड इवनिंग. हाँ, शुभ बोलो. सर मैं ऑडिबल? हाँ, you're audible. बताओ. सर आपने जब बताया था सर, 3 जो हम ये यूज करके साइन वो अनसाइंड उसके लिए होगा. हाँ. और 2 करेंगे वो साइंड के लिए होगा. सर मेरा साइंड के लिए नहीं, मैंने क्या बोला था, ऐसे कर रहा है तो मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर MSB 1 है, ठीक है, even in that case if you write this thing it will be shifted without any bias. It will be 1 will be here, है ना. यहाँ पे 0 आएगा बाहर से, है कि नहीं? If at all this is the like this is only a 6-bit value है तो ठीक है. I'm not, this is 32 में 1 हो सकता है, right? तो you should not be bringing one more 1 just to preserve the sign, ठीक है. So this guy won't preserve the sign, बस ऐसे समझो. This is why we'll rawly do whatever is in the bits. Bits में जो है वही कर देगा वो सीधा. मतलब बिट्स ऐसा है तो उसको राइट शिफ्ट कर दो बस. तो सर आपने 2 में अलग क्यों यूज किया सर? E1 में वो किया, ऑड में तो सर. किस में ब्रो? सर आपने 2 E1 में सर ये अनसाइंड किया, फिर ऑड में उसको हाँ, तो देखो, वो सर I told you ना, लेफ्ट शिफ्ट में you don't have right, you only have one type of shift, that is this one,
राइट शिफ्ट में यू हैव टू टाइप्स ऑफ थिंग्स. One is left shift and right shift. I'm talking about Java. I'm sorry. It'll in right shift में you have two things. One is signed and unsigned. Correct. ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब राइट साइड पॉइंट कर रहा है, राइट साइड जाने के डायरेक्शन में है ना. सो दिस इज राइट शिफ्ट, राइट. दिस इज लेफ्ट शिफ्ट, मतलब ये लेफ्ट की तरफ मूव कराएगा, ये राइट की तरफ मूव कराएगा. ओके, सो लेफ्ट में नहीं होगा जावा में. हाँ हाँ ओके ओके सर, वही था मतलब. ठीक है. Thank you, गाइस thank लाइक फ्लिप बिट्स ना, इवन आई ट्राइड. ठीक है. if you want me to do it, ठीक है, I can do it, but let me just save this code where somewhere. ठीक है, but I didn't find like I can do it in a very hacky way. ठीक है, but I don't think that like you guys will be it will be confusing you more. ठीक है. So right now what I did, let me tell you. ठीक है. So let me just khatam all these things. Let me remove everything. So if I go here into Java, you can see this is the solution. Okay? Just see this. I've taken a scanner. I've taken int value. I'm just running those number of test cases. For each value, I'm just trying to find the negation of it. मतलब one's complement of it. What do you think will the value be? It should be this value, but since it's an integer, it's an signed value. मतलब ये int है ना, जिसके वजह से मेरा आंसर सही है. ठीक है. और इसका bitwise representation देखोगे, it will be same as these guys, but you can't hold them in that because of its signed value. It will give the same thing, Aniket. You can take that. Okay, you can do 0x, and if you take the XOR, it is the same thing as this, but still you will be getting it as a negative number. देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो भी वैल्यू होगा, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वैल्यू लाइक दिस, सम वैल्यू लाइक दिस, all the 32 bits, some 32 bits तक ऐसा है बड़ा सा वैल्यू. If you do negation of this thing will be flipped. This will be 1, this will be 0, this will be 0, this will be 1, this will be 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, सब zeros हो जाएंगे. ठीक है. मैं ये बोल रहा हूँ कि this is a negative number, right? But यहाँ पे they are talking only about the unsigned values. Correct? They are only bothered about printing them. ठीक है. They are only bothered about printing them. ठीक है. But this is the way. अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकता हूँ, नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, राइट. तो इस वैल्यू को आई कैन कन्वर्ट इट इनटू एन अनसाइंड स्ट्रिंग. जैसे कुछ लोग बोल रहा है कि अनसाइंड स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट कर दो. आई कैन गो अहेड एंड मेक द सॉल्यूशन वर्क. बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, जैसे लीड कोड में, ये सब में, लाइक व्हेन यू गिव द कंटेस्ट, यू आर जस्ट सपोज्ड टू रिटर्न दैट नंबर. ठीक है. वो नंबर को जाके दे विल एग्जामिन नॉट द वैल्यू बट द बिट वैल्यूज, कि बिट्स कैसा है, 1 है कि 0 है कि क्या है. एंड बेस्ड ऑन दैट वैल्यूज यू विल बी टोल्ड कि ये सही आंसर है कि गलत आंसर है. ठीक है. राइट. सो आई कैन डू अ थिंग. ठीक है. तो आई कैन कन्वर्ट एन इंटीजर. ठीक है. कुछ है, लाइक आई कैन टेल यू, जस्ट अ सेकंड गाइस. देखो, यहाँ पे मेरे पास समझ लो एक वैल्यू है. ठीक है. लेट मी जस्ट टेक अ वैल्यू. तुम लोग को अभी समझ नहीं आ रहा, देन लेट मी टेक इट, लेट मी राइट इट. इफ यू हैव अ वैल्यू, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, सम 1 1, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, सम 1 1 1, सम 0 0 1 1, ये 4 हो गया. इन दैट वे बड़ा सा लिखेंगे मैं, हम, है ना, 1 1 0 1 1 0 and 0 0 1 0. This is a 32 bit, है ना. So it is a value. If you do negation of this, if you take one's complement of it, it is going to be something like this. ठीक है. एंड इट इज अ नेगेटिव नंबर. देखो, ये नेगेटिव नंबर है क्योंकि वी आर स्टोरिंग इट इन इंट. इंट में नेगेटिव नंबर की तरह स्टोर होगा. बट इफ यू लुक इट इनटू, लाइक अगर मैं C++ में जाऊंगा एंड इफ आई स्टोर इट इनटू एन अनसाइंड इंटीजर,
it will be looking like an unsigned integer. मतलब ये actual value process करेगा. अभी it is a negative value. ठीक है, तो negative value print कर रहा हूं मैं, correct? तो like अगर if at all I'm doing it in any other portal where I'm supposed to return this value, उस केस में like if I return this, ठीक है, I'll be getting the same answer. मेरा मतलब ये है कि ये जो value है, this value is same as -2 का bit manipulation, I mean bit representation, and this value का bit representation is same, right? इसका bit representation and इसका bit representation is same, ठीक है, but the difference is you are having that, ठीक है. तो like what I did is I went to C++ and did that because C++ में unsigned int का facility है हमारे पास, right? Ankit, how it is getting converted into negative is कि MSB is getting set ना. See this value, इस value में देखो ये value 0 है, right? So if you are taking negation of this, ये value 1 हो जा रहा है, तो ये negative value हो जा रहा है ना, bro. Correct? तो like here हम tackle portal को कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा बना, क्वेश्चन ही गलत बना है कि how to convert this negative value to positive value. We can't convert because ये value है ना, ये जो negative value है ना, ये negative value इसीलिए है क्योंकि this guy is more than what our integer can take. It got overflowed. क्योंकि I told you right कि signed के वजह से like it is not 2 power 32 minus 1, it is minus 2 power 31 to 2 power 31 minus 1. इतना ही range है. So this guy belongs to this range which is not present. Correct? Correct, Rani? ठीक है, तो I can convert this into an unsigned integer or I can just convert this into something else, right? So मतलब like what I'm saying is take away the answer from it. मतलब कैसे करना है क्वेश्चन को वो ये ले लो, ठीक है. तुम ऐसे कर सकते हो, नेगेशन कर सकते हो, या तुम you can XOR it with this value which I just explained. If you XOR it with all ones, ठीक है, you'll be getting the same value. You'll be getting it negated. Correct? Just take away from it, ठीक है, it will also give a negative value, ठीक है, but हमारा solution, हमारा मकसद should not be to solve all the questions. सबका टेस्ट केसेस पास करना नहीं है, हमको सीखना है ना. So you are learning that one thing you're carrying from here is कि -2 का bit representation और इसका bit representation same है, right? But लेकिन unsigned में compiler will read it in this way, signed में you'll be reading it in this way. और हम signed ही है Java में, we don't have this. So as someone is suggesting to use something called integer dot, like I can just Google it, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे Google करना है, right? So if you want to convert Java signed value to unsigned, ठीक है, just try to Google this. You'll find that कि unsigned int present नहीं है and all blah blah, but कोई ना कोई method होगा just to print it, ठीक है. You can't return it but you can definitely print it. See, Java का value 0 से लेकर यहाँ तक जाएगा, फिर negative हो जाएगा, है ना, लेकिन unsigned में ऐसे दिखेगा, right? And you can see that -2 जाते ही like this value is also same, the bit representation is same, but it is a int value इसीलिए हो रहा है. But if at all it is understood as an unsigned value, it will be like this. Guys, are you getting this? Right? तो वही यार, मतलब देख लो इसको, like you have something called printing an unsigned integer to unsigned string, you can convert it into an unsigned string, ठीक है, ऐसे कुछ कर सकता है, you can see, but again I'm telling you कि वही सीन होने वाला है, like it's not, I don't think कि like we are doing it in this way, but again like you should know the limitations of Java. That is the education that you are getting from here, from this question, ठीक है. So let me just try this. Even I didn't try this, but like it's about printing, so you are able to do it. But if you are returning it, you can't do it, ठीक है. उस केस में सही हो जाएगा आंसर तुम्हारा. Okay, let me just write it here. Let me print it and let me see if it is working or not. Let me run the code. So this function mostly says कि it will convert this into binary value
and then from that binary value it will convert what is the value from the long. ठीक है, ये तो कर सकते हो ना तुम लोग guys, right? So I think this is passing. I guess you guys are saying some test cases are failing. So let me see why they are failing. Okay, let me run. Yeah, you can do it in that way. Okay. 2 test cases are failing, I see. What is this long? Yeah, this is cool. Like you can do it in this way, huh? Dekho, I think the test cases are failing. Just I'm not sure why they are failing. I need to do a little bit of deep dive. Okay, so let me just see. Let me try Aniket's code. Okay, let me just try this thing. So what you're doing is you're getting a long value. Okay, you're finding this value. This is nothing but that value of 0 of f, that value. All the 32 bits one value. If you're XORing it with it, you're getting this value. I think this should work. You can use long and you can use it. Okay. I'm getting some value like this, I think. Okay. Okay, cool. So my bad. So let me just see this thing as well. Let me run the code. Already defined. Okay, n hai na? Let me mark it as T, man. T for test cases, right? So see, what you're doing is you're getting this value into the long. Okay. Let me just tell you, you're getting this value into the long. Okay. And you created this thing. What is this? This is nothing but O, F, O, 0, X, and all the 32 bits as 1. Okay. So what is this 1L? L is nothing but long value, right? So this operation will happen in long value. Long ka 64 bit mein you are shifting it to 32 bits and then subtracting 1 from it, right? So what it will do is it will kind of generate you 32 ones, right? So you are kind of putting 32 ones, and you're XORing your value with it, so that remaining all zeros won't make any difference, but these guys will flip it. Are you getting it? Hello? Okay, if at all the test cases are failing, then leave it. Okay, we did right, both the ways are right. Okay, this way is also right, that way is also right. If that's the case, then we'll kind of figure it out. I'll just see it is working. See, test cases are not failing. So for that approach, I need to just try to see if they are kind of is the string thing mattering a lot or what. I need to check that thing first. वो check कर लूँगा तो I think it will be fixed. ठीक है? You don't have to take the input as long. So yeah, I'm taking the input as long. See this thing. This is the input, right? This is the test cases, right? So in this way, you can overcome this. So how did I do this thing? Okay, we have taken it in the long. Okay, मतलब 64 bits लिया हमने, right? If you just do it just by the int and just cry over कि ये sign नहीं है, unsigned नहीं है, you just always try to need to find a way how to make your code run. ठीक है? Here यहाँ पे printing हो रहा है, तो इसलिए you can do it in this way. ठीक है? अगर int ही मांगा था, in that time you need to return the int only. ठीक है? So you got a 64 bit, ठीक है, into the picture. You created a mask. Instead of this, you can create 0x FFF also, all Fs, 8 Fs, right? Even this thing will act as a mask that is going to flip all the bits. Okay. So if you do bitwise thing with any of these things, it will flip, right? So it will flip it. I told you this thing multiple times, right? If you XOR it, then I'm just printing it because I created this guy which is only running from which is only having 32 bits. Line number 11. See, line number 11 is the generation of the mask, generation of this mask. 1L means
it means that it is a long value. L, if you put 36L, it means that 36 is not a number, it is a long value. If you write 36, it will be defined as int value, int 36. But if you put L at the end, it will be understood as it's a 36 long. So it will give you some 64 bits. Cool, Reni, no worries. Correct, Harish, that is what I was saying. Okay, here just because we are able to print it, okay, just because we are able to print it, हम इस क्वेश्चन को बाईपास कर पा रहे हैं. ठीक है, अगर int रिटर्न करने बोला ना, ठीक है, even in that case we need to return only the int, which will be a negative value. Okay, so if the compiler is designed, if the question is designed in such a way that they will look at the bits, not the negative or positive value, then your solution will be correct. That is what I'm saying, which usually people do. Is that cool, guys? Yes. Shubh, we are just making 32 bits one because the value that you're going to get is only 32-bit value. You're going to only flip the integer. You should not flip the whole long. Shubh, you should not flip the whole long. Thoda time lagega. I think you guys understood this. Let me just trigger a poll and just to check what's your understanding. Okay. So just say yes. Okay. I think काफी yes आ चुका है. Great. To the people who didn't understand, ठीक है, like एक और बार recording देखना. Let me repeat it. एक integer को हम long में ले लिया और एक mask बनाया जो integer के लिए है, right? मतलब all the 32 ones और उन दोनों को XOR कर दिया जिससे पूरा इंटीजर फ्लिप हो गया और उसको लॉन्ग को प्रिंट कर दिया हमने. बस प्रिंट करना हो रहा है, इसीलिए वी आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन. लेकिन अगर रिटर्न करने की बारी आ गई, इन दैट केस इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन फॉर्मेशन कि वो एग्जैक्ट वैल्यू देख रहा है या बिट देख रहा है. द वे दे टेस्टिंग योर कोड, इट डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है, we can write 11 in another way. Yeah, you can write it in another way, man. You can write it in this way. Power of 1, like this math dot power of 1. You can multiply 2 with 2 power 23 and then you can do minus 1 also. Even this is also valid. But this should be long. Right? Correct? What is that you're doing? Okay, cool. What is this question, by the way? The same question. So for every bit you're doing, right? See, that's what you're doing. For every bit you're doing it. Mask 1 है, ठीक है? You're running a loop, ठीक है? You're running a loop. So what another person is doing is, you have a value like some value like 1011111010 जो भी है. You're taking 1 here and you're flipping it. You're doing XOR. It got flipped. Right now you're moving this 1 here. You're doing the XOR. It got flipped. You're moving 1 here. It got flipped. You're moving 1 here. It got flipped. In that way, you're doing it for each and every bit. Instead of that, just make a mask like this with all the bits are set. Okay, and do the XOR directly. एक बार में हो जाएगा. In one step, you're doing it. That is also correct, but that is again taking 32 steps to do. Correct? Guys, shall I move forward? Yes, correct, Chirag. It's the क्या बोलते हैं overflow condition हो रहा है ना इसकी वजह से. That's the reason why we are not able to do it. Cool, guys. Let me do few more. I wanted to do a few questions, man. Like I didn't find time. I was discussing a lot of doubts today. So we did flipping. We did what is this? We did swap this. So I think all the doubts got cleared, right? So there's another question. This question, guys. Always remember, okay?
अगर जोर का कुछ क्वेश्चन आया, लाइक देयर इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ जोर, टेक दिस एज होमवर्क, ठीक है? पेयरवाइज जोर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है? जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, जोर का बहुत अच्छे क्वेश्चन है. लाइक every question boils down to the case of even time zoring and odd time zoring. Well, it will just boil down to this particular thing. Yeah, I'll keep the I'm keeping the doc every day. So did you guys try this question, zor of queries of subarrays, guys? कितने लोग को हो गया, कितने लोग का हो गया this particular thing? Prefix method correct, Rani, and you're so smart. Okay, no worries. Can anyone just unmute? जिसको समझ नहीं आया वो बंदा, like जिसने ट्राई किया और नहीं हो पाया वो बंदा एक बार अनम्यूट करो. Let's solve this question together. Can anyone tell? Can anyone do this for me? Shamshad Ansari, Shamshad, you? Can you? Can anyone just raise your hands? अभी तो strength काफी कम है, so you can do that. अच्छा, कोई नहीं आ रहा. Okay, cool. So see, at least someone explain me the question. Someone explain me the question. I didn't read the question. Anyone ready? Can you? Raise your hand, I'll unmute you. हेलो हेलो हाँ, हेलो ब्रो, बताओ क्वेश्चन क्या है? सॉरी, बताओ. we are given an array of integers, Positive is integers. array Okay. array. And then Okay. we are given an array for queries which will Okay. give starting position and ending position of the So query of arrays, right? It is like Yeah. two values का starting combination. position and ending position in each of the array in Okay. query. Okay. And we need to return an array with sort of array from left to right values Correct. given. It's like मतलब sum की तरह है ना? क्या बोलते हैं Yes. वो? क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन को? Like we did this question, right? Range some immutables. Guys, don't you think this is like the same question? Guys, hello, right? तो बस जब भी queries की बाहर आ गई, I told you you need to do some pre-computation, right? So you have an array, something like this, ठीक है? And just try to find the prefix array of it. That is 1. फिर 1s और 3, फिर आता है 1s और 3s और 4, फिर आता है 1s और 3s और 4s और 8, ठीक है? This is an array, right? So उसके बाद if you are getting a query 0 से 1 तक, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? Like what will you do? This is 0 and this is 1, right? This is 0 and 1. So what will you do? Can you guys tell me? Sum में कैसे होता था? Plus होता था, right? But what I am feeling is if you want from 0 to 2, if you want the XOR from 0 to 2 or 1 to 2, ठीक है? What you need to do is कि you'll be calculating this XOR and you just need to remove this particular part, right? This particular part from it, correct? So what is that part? Whatever is left, that is 0, right? So you just XOR it with this value. क्यों? So if you only want XOR of these two values, ठीक है? For example, so that is nothing but XOR of query between 2 to 3, right? So you'll take 3 का पूरा XOR ले लो
and XOR it with 1 का value, so that it will be 1s or 3s or 4s or 8 XOR 1s or 3. So this 1s or 3 is cancelling 3 and 3, right? So you're getting this thing only, 4s or 8. Don't you agree with this, guys? Like it's like subtracting only, but XORing it again is kind of subtracting it. रेंज सम इम्यूटेबल में क्या करते थे, अगर 2 से 3 तक की सम चाहिए तो 3 तक का पूरा सम ले लो एंड देन रिमूव 1 से जो भी है, राइट, 1 इंडेक्स वाला जो भी है, रिमूव दैट, राइट. बट अभी क्या होने वाला है ना, राइट, यू विल बी XORing दिस 1 से इंडेक्स वाला विद दिस, सो दैट with this thing, so that automatically these things will be removed because they will be occurring in even number of times. Query means usually prefix sum आती है into the picture. Renny, did you get what I just said? Yes. कितना क्लियर है 100% में से? हेलो, Yes, sir. कितना क्लियर है ब्रो? Understood. I solved the question. So you solve this, right? So I'll be Yeah. kind of creating a prefix XOR. देखो ध्यान से, I'll be creating prefix XOR. A's or B, A's or B's or C, फिर उसके बाद A's or B's or C's or D, उसके बाद A's or B's or C's or D's or E, उसके बाद A's or B's or D, C or E's or F, ठीक है, उसके बाद A's or B's or C, D, उसके बाद E, F, G, ठीक है, उसके बाद A, B, C, D, ठीक है, E, F, G, H, ठीक है. So if I just want from 2 to 5, 2 to 5 का XOR चाहिए, right? What I will do, I'll just take 5 का XOR, I'll just take this XOR, ठीक है, and I'll just remove whatever is before that. मतलब 1 के साथ जो भी था, like 1 XOR जो भी था, I need to remove it from this. How to remove it? Removing is nothing but XORing with this value के साथ इसको XOR कर दो, so अपने आप remove हो जाएगा ना. Just see, A's or B will be cancelled with A's or B. You're getting all the values from here to here. It's like that only, where a range sum immutable में prefix of J minus prefix of I minus 1 करते थे ना. Now you don't do minus. What you will do is prefix of J XOR prefix of I minus 1 करो, जिससे I minus 1 वाला इसका I minus 1 वाले से pair up होके they will be vanished. Guys, it is like removing it, right? So if you remember the range sum iterable, so this guy possesses all the values. Okay, let me explain in a simple manner. See, prefix of J here means A's or A of 1, A of 2, A of 3, right? In that way, till A of J. Okay, and prefix of I means A of 0, XOR A of 1, XOR A of I. यहाँ पे भी somewhere I will be there, ठीक है, considering J is greater than I. Now, ठीक है, now if you want to get, like if you XOR these both things, ठीक है, if you XOR prefix of J with prefix of I, what will happen? All these things will be there. Prefix of I, XOR prefix of I plus 1, right? Till XOR prefix of J. ठीक है, this is of XOR prefix of J. XOR, ठीक है, A of 0, XOR A of 1. In that way, A of I. Can you see कि अगर मुझे बस XOR of all elements from I plus 1 to J चाहिए, ठीक है, तब मैं J को और
I का prefix को XOR कर दूंगा, you can see that these elements are XORed twice, right? So they are kind of cancelling each other till a of I. उसके बाद whatever is left is nothing but a of I plus 1 till j. Correct? So I got the XOR of all the elements from I plus 1 to j. Don't you agree, guys? It's like range sum immutable only, but you're not subtracting, you're XORing it again. So that they will get subtracted. They will get removed from the equation. Aniket, did you, Aniket, na? Aniket, did you understand? अगर मैं -1 तक किया सोचो तो I से j तक तो मिल जाएगा ना. That is what I'm saying. थोड़ा टाइम लगाओ, ठीक है. It's like a of 0 से a of I तक you are XORing it again. So again के वजह से सब cancel हो जाएंगे. You know that XOR of x of XOR x is equals to 0, right? So if at all in even numbers, if you XOR, ठीक है, it will give 0 only. Correct? Okay, no worries, Shubh. Just attend that prefix class. जिसमें range sum immutables पढ़ाया था. It is nothing, man. Like you already learned this, ठीक है? Prefix sum में like prefix of I is nothing but I तक XOR हो गया. Prefix of j में I तक XOR हुआ, उसके आगे भी XOR हो गया j तक. If you XOR again both of them, they are kind of removing all the elements of a of I. So only element that are left is a of I plus 1 till j. ठीक है? So I can easily code it now. ठीक है? But I'm just giving this as homework for you guys. ठीक है? अगर नहीं हो पाए तो कल डिस्कस कर सकते हैं, no worries. ठीक है? पेयरवाइज XOR देखो प्रीतम, पेयरवाइज XOR को ऐसे मत करो, कुछ और दिमाग लगाओ. Try to think in a different way. ऐसे मत करना. TLE देगा ही, एंसर मत करना. Think of it in a different way. XOR का सब ऐसे ही है guys. XOR का सब ऐसे ही है. ठीक है? All questions are like this. Try your assignment questions, ठीक है? And all the other questions, ठीक है? I think we can stop the class for today. We have learned some heavy topics today. काफी सारी चीजें सीख ली हमने, and all the doubts clear हो गया mostly, and we are wrapping up this thing today, right? So try practice a little. Okay, you might face some challenges. I think you guys are completely ready to face the challenges right now. So tomorrow we'll be starting trees. It's a very good topic. Okay, and that will run for 4 days, and then we can end. Cool. Correct. It is like a big brother of linked list. Yeah, trees are only pending. I think we can stop by 23rd. Okay, so that's it. Okay, nice. Practice, guys. Practice करोगे तो हो जाएगा, सब सीख जाओगे. ठीक है, don't worry. We'll discuss them in the weekend. ठीक है. I had to like we covered a lot of things today, right? So इसमें like शुभ like basically ये होने वाला ना कि in this month we are already anticipating that कि you guys will be having Diwali break, ठीक है? So in that Diwali break I'm planning to give you some questions, ठीक है? And after you come back from it, we'll discuss those questions and also revise all the things, all the topics. So it's not done completely, okay? I mean, the whole topic is not done. We'll just because of Diwali, we are giving some break so that you guys will have time to practice the things, okay? Right? And इसीलिए थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ रहा है because most of you won't be attending the classes during the Diwali phase. You guys will be traveling and you guys will be in your hometown, correct? So after you come back, okay, then we can revise all the questions that I given you in the Diwali break, and then we'll also, if at all the questions are done, okay, we can also discuss the remaining problems whichever you felt I didn't discussed.
ठीक है? So it's not the end of the module, and we are anticipating the same thing because we have a lot of breaks in this particular month, right? So we were anticipating that. Do take some time. Taking time is really important. Take some time and practice things. Okay, that is very, very necessary. Without practice, DSA is nothing. Okay, DSA is not that you will sit and listen and you will be understand. It's not a movie. Okay, it is the evolution of your brain. Okay, so you need thinking, lot of thinking. Okay. Yeah, next module will be of 2 months. It will in that module we won't be like teaching anything. We'll be only just doing the questions, all the questions, starting से लेकर अब तक पूरा arrays का, linked list का, stacks का, queues का, everything करेंगे. ठीक है? Yeah, I'll be teaching module D, I guess. So you guys will be having that. ठीक है? Let's see जो भी होगा. ठीक है? You can leave, guys. Thank you for attending. DSA projects वो सब उसी में होने वाला module D में, right? You will be having project building sessions and all those things. ठीक है? Okay, man. Bye bye. Good night. Good night, everyone.